cleaning up the whole area, and then we are trying to uproot up this gromolinia, which is totally very prolific grass species which spreads very fast. So we are trying to eradicate them, but it's taking time. And then we are planting this species of grass and fodder species. At least we get back those even the bigger animals there. And then finally we use fire as a tool to burn them off, and then we use even the seeding. So grass species are seeded, they are broadcasted, and we do that. And on the restoration component, you can see this is in somewhere in before 2018-19 pre-COVID times. So now on the just on the right side is after the grassland management has been done. So at least you can even find the cheetahs on this on the left side, but it's not visible. So now when the grasslands are made, so it's very well visible, and then you can see the management of the grass, and then finally this is what it looks like. On the monitoring, as I very clearly said, the use of technology. Now, I think in Bhutan, we are the first department to introduce drone technology. So almost I have with me 10 parks and sanctuaries, and then 14 territorial divisions. In all these parks and territorial divisions, we have drones. Some have 2 to 3. And we have an individual officers who can manage the drones, and then we keep flying them. And this is especially, these are used for the anti-poaching activities. And then thanks to the drone technology that we came across this white-bellied heron, which never was seen in Phipsu. So then the smart patrolling. So we use an app, the special monitoring reporting tools. So each foresters, when they go to the field, they use this app, the smart patrolling. And Bhutan is one of the WLF well-tested app, which has been an immense boon to us. It's such a tool that it can generate a report, that we can come up with the hotspot areas, so that wherever we come or whatever you cite, you can have that. And it can also cross-check whether our colleagues have been to the field or not. So it reports that online, real-time, if you want, you can come up with the real-time report being generated from there. So then we also use these camera tabs. So camera tabs, be it for other sensors or anything, so we profusely use this camera tab so that we get. And then finally, we are also going into eDNA. So we are looking at the eDNA. Maybe in the next few years, I think we don't have to do this biodiversity assessment. I think the eDNA itself will be a great success, and if that comes through, so then the number of hours of things will be reduced, plus then the labor intensive could be done that. So finally, what I feel is the leadership. So, and if you leave everything for people working in the forestry department, lower up from the lower to the forest guard, and if you leave everything to them, then we are not going to get done. First is getting the communities along, work with them, and then a leader doesn't stay in the offices providing lecturing the session. So I, for one, whenever I get time, I go down to the field, starting from the department, the head itself. So then the chief, especially then we are all headed by the chief forestry officers. So the forestry officers go to the field, work with them, and then in Bhutan, our chiefs do not have to wait for all these answers, getting the forestry activities done on the ground, or getting the report do not have to come from the lowermost to the uppermost, because our chiefs, they involve themselves. This is how we do things, so that the motivation aspect is there with everybody right from the top to the bottom. So in a nutshell, I want to say that yes, conservation, restoration, monitoring
we all have to work together for the living space that we have. So now many of the other areas, the areas get shrunk. The conservation does not find so much of value, but here in Bhutan we do an excellent job. Last October, before our government left, we managed to declare one more biological corridor. So at this point of time, we in Bhutan, we have managed to secure 52% of the geographical area under the protected areas. So that is what we have done. But at the same time, I must also tell you that the Department of Forest is under tremendous pressure now, saying that conservation for whom? Who is to benefit from the conservation? Is it the government? Is it the forestry department? Or is it for the community? So that is strongly coming, and I think the livelihood essence which our chief was speaking in the morning makes sense. So we must have more of how best our conservation pays off. Many of our politicians have been telling us that, no, the world applauds you. Bhutan, oh, carbon neutral country. Oh, high biodiversity country. But back home, we have to, there's so much of human-wildlife conflict. So how do we get to work together? This is some of the juxtapuzzles. We do not have easy-made answers there. So we'll have to live together. It's much easier to say that living together, but on the ground, things are totally different. And I'm only trying to say that we need to work together, like we have two hands to working together, and then we are working on that. And in Bhutan, we are lucky that we have a conservation fund that is there for next 13 years, the Bhutan for Life. So we are working on that, and that's basically looking at working together, the livelihoods, components, and the conservation together. So with this note, it's almost 14.5 minutes, so I'll end here. So thank you so much. Do we have a code list so that we can pass on to the participants? Code list? No. Or, sir. Thank you, sir. And what you are doing, it has directly effect to our Raimona also. If you see 136, pillar number 136, people see 154, 150 spotted there. And because of your intervention, and visitors from Indian side, they are enjoying the beauty of both India and Bhutan. That's where we stand together actually. And shall we put, I think we will put all the questions together at the end, yes. It will be very nice to take it forward. And just small announcement, we have our, with us, Sri Ghanesham Das, our Honorable Executive Member, Department of Agriculture. So let us take this opportunity to felicitate him. So our field director, sir, will felicitate him with an Arunai. Thank you, sir, for your presence with us in the technical session. Now, may I request Dr. Devashish Chakraborty, sir, to take your session. It's me. Presentation final. I guess. Good afternoon. All the technical personality, Mr. Mahapatra ji, Mr. Chaudhary ji, and scientists, all, they will be knowing the technicality of this thing. I am not for them probably. Because when Mr. Deka told me, then when I saw the audience, I thought, yes,
दोज हु विल मैटर रियली, उनके लिए मैं बात करूंगा। मैं फॉरेस्ट सर्विस में था, रिटायर्ड हो गया, एंड सर्विस में मैं वही चीज देखता आया, वही चीज बताते आया। ये हम लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन समझते हैं बहुत कम। आप एग्री नहीं करेंगे ना? ए ट्री, गाछ ऑक्सीजन देते हैं, ये मैं क्लास 3 से जानता हूं, लेकिन समझते नहीं हो। डू यू टेक एनी एफर्ट इसको बचाने के लिए? नहीं। जो दोज हु आर फ्रॉम स्कूल, आप एक एक्सरसाइज कर लीजिए आज। आप अगर, मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरा 2 सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए डेली, 30 दिन, 365 डेज, एंड आई एम 65 और 5 साल रहूंगा, 70 मल्टीप्लाइड, कितना करोड़ रुपए आते हैं? आर वी रेडी टू पे 10 करोड़ रुपी? और अगर हमारा घर में 5 मेंबर्स है, 50 करोड़, कैन माई पेरेंट और योर पेरेंट कैन पे 50 करोड़ रुपी? अगर कर सकते हैं तो काट लो सब पेड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी प्रॉब्लम है। दिस habitat restoration is not only for the animals, for us. स्टीफन हॉकिंस करके एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उन्होंने बोला अगर पेड़ ना रहे, फॉरेस्ट ना रहे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन 200 इयर्स में नहीं रहेंगे। देयर विल बी, कोई बारिश नहीं होगा, कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप नहीं होगा, कोई पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर बटरफ्लाई ना रहे, बर्ड्स ना रहे, कोई फल फ्रूट्स कुछ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वी आर लूजिंग। सो मैं ये बोल रहा हूं कि हैबिटेट रेस्टोरेशन इज नॉट फॉर एनिमल ओनली, इट इज फॉर आवर ओन सर्वाइवल। मैं जिस्ट में बता रहा हूं, तो रेस्टोरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है किसका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऊपर ज्यादा, एनजीओज, दोज हु आर एसोसिएटेड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उनका ऊपर। लेकिन ये एक चीज देखना पड़ेगा कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो भी एनिमल हो, कौन सी फॉरेस्ट में, कौन सी पेड़ में पसंद करते थे, ये मुझे जानना जरूरी है, नहीं कि मैं टिक लगा दूंगा। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, जिस में मैं ये बता सकता हूँ, द ऑल टेक्निकल पीपल दे विल अंडरस्टैंड इट, कि दुनिया में आज सबको समझ में आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो हैबिटेट को, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। सो दुनिया में बहुत कुछ हुआ। जो स्टूडेंट्स जो है, आप लोग देख सकते हो, UN, देन COP, COP, G7, सबने बोला लेट अस मेक ए नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड फॉर आवर ओन सर्वाइवल बाय 2050. दैट विल कम लेटर. अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, डॉक्टर स्मिथ हैज टोल्ड दैट प्लेस वेयर ए प्लांट एंड एनिमल लिव्स, एनिमल इंक्लूड्स द ह्यूमंस आल्सो. एंड और एक चीज देखिएगा, इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. इसका मेरा एक एक्सपीरियंस में बताता हूँ. सिपाहीजला में, त्रिपुरा में एक पेड़ है टर्मिनालिया. ये टर्मिनालिया पेड़ यूज्ड बाय 3 ग्रुप्स ऑफ मंकीज. कैप लेंगूर प्रेसबाइटिस ऊपर रहता है, बीच में स्पेक्टाकल मंकी जो स्पेक्टाकल लेंगूर हम बोलते हैं, और नीचे रहता है रेशस मंकी. हाउ देयर फूड प्रेफरेंस चेंजेस यू सी. एक ही पेड़ में 3 आराम से रहता है. दिस रेशस मंकी दे ओनली टेक द कोटिलिडन्स, हार्ड पार्ट ऑफ इट. लेकिन प्रेसबाइटिस को भी हार्ड पार्ट नहीं लेते. दे विल टेक द आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट्स. एंड लीफ में भी दे विल टेक द पिट्यूल्स, एंड बाकी लीफ को फेंक देंगे. एंड
rhesus monkey will take these leaves. So ये चीज is very important to keep in mind. हम लोग ये चाहते थे, मन मन में अभी भी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, बट हो जाएगा धीरे धीरे. द वे दुनिया का सब एक साथ हो रहा है, जैसा कि आज इधर इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, जगह जगह में ये हो रहा है, हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते. वी आर होपफुल. इफ यू सी द राइट साइड फोटोग्राफ, किया था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो गया. वी हैव कट एवरीथिंग. फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस जो मैं पहले बता रहा था, फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरत है, नॉट ओनली फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. पानी नहीं रहेगा, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सब कुछ है. वी आर फीलिंग इट, हम लोग भुगत रहे इसमें. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी आर कटिंग 10 मिलियन सेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर. पोर्तुगाल जैसा कंट्री का बराबर है, काट लेते हो हम लोग. देखिए, टिम्बर के लिए हम लोग काटते, क्लियर फिलिंग कर लेते. देयर वी डिस्ट्रैक्ट ऑल द पॉपुलेशन. अभी तक हम लोग 69 एनिमल्स का डिक्लिनेशन देख रहा हूँ वाइल्ड लाइफ WWF का रिपोर्ट में. एग्रीकल्चर के लिए हम लोग ये करते हैं, ऑल अनएथिकल एक्सपेंशन. हम चाहते हैं कि हम अच्छा रहे, लेकिन कैसे रहेंगे? अगर दुनिया ठीक ना रहे, हम अच्छा नहीं रह सकते. बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, अनएथिकल कटिंग ऑफ जंगल्स. ये जो मैं बता रहा था, एक ही पेड़ में 3 एनिमल है. सो दिस इंडिजिनस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी गो फॉर रिस्टोरेशन और मेकिंग एफोरेस्टेशन वर्क. ये देखिए एक चित्र है जिसमें हम लोग क्लियर फिल कर दिया पूरा. तो इस साइड में, राइट साइड में जितना एनिमल्स थे, दे आर गॉन. सो दे आर प्रोबेबली वी नीड, दोरजी सर जो बता रहे थे, ये ट्रांसबाउंडरी कोऑपरेशन इज नीडेड. मे बी एक साइड में नहीं है कुछ, एक साइड में पेड़ है. Even if it is like that, even if it is mosaic, problem एक ही तरीका सा है, क्योंकि all animals as a daily activity pattern वो घूमते रहते हैं. They need an area for their movement, for healthy living and for their food, reproduction, everything. जैसा देखा गया कि जो सार लोग हैं बताएंगे, राजाजी नेशनल पार्क के देखा है, एक टाइगर वाज मूविंग 70 स्क्वायर किलोमीटर. तो अगर हम लोग इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, इसको इधर काट लिया, इधर काट लिया, इधर काट लिया, तो क्या हुआ? ही डज नॉट गेट द सफिशिएंट एरिया फॉर हिज सर्वाइवल. तो क्या हो जाएगा? मनमोड़ा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. दैट पहले भी मैं बताया, डिफॉरेस्टेशन विथ सुटेबल स्पीशीज बहुत जरूरी है. हम लोग ये सिंपल है, आइडेंटिफाई द एरिया, टेक द हिस्ट्री ऑफ इट. इसको पहले के साथ देख लीजिए, रिसोर्स इकट्ठा कर लीजिए, नर्सरी ऐसा प्लान बना लीजिए. देन एक चीज है अवेयरनेस एंड एडवोकेसी. आई एम हैप्पी टू सी दैट मोस्ट ऑफ द एडीसी मेंबर्स आप लोग इधर आए हैं, क्योंकि जनरली विथ माय एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज ए सेमिनार लाइक दिस, वी पीपल गो, वी शाउट, वी लिसन, वी कम बैक. But I am happy that Bodoland has taken a different attitude in altogether. आप लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट जनरेशन है आपका, आप लोग ही संभाल लेंगे ये दुनिया को, ये बोडोलैंड को, ये आसाम को, ये इंडिया को.
अगर आप ठीक ठीक से समझ जाए तो हमारा छुट्टी, हमारा कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल थिंग है जो हम लोग अपना सुख के लिए सब कुछ कर रहा है। इकोनॉमिक्स, ये जो मैं बता रहा था ना, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड अभी चाह रहे कि बाय 2050 हम लोग नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड को बनाए ताकि देयर इज नो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका बिना कोई चारा नहीं है हम लोगों को। आप देखिए, कोई कोई चीज मन में देखिए आप। लास्ट ईयर कितना साइक्लोन आया था इन दिस रीजन, बे ऑफ बंगाल में कम से कम 10। व्हाई? इट इज बिकॉज वी हैव कट डाउन द ट्रीज। जब कोई सी सरफेस एरिया का टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तब देयर विल बी साइक्लोन। एंड गर्मी आप देख लीजिए, एटलीस्ट इन त्रिपुरा वी हैव सीन, त्रिपुरा में ऐसा कभी नहीं था। इफ देयर इज ए टेम्परेचर, नेक्स्ट डे देयर इज रेन। इस टाइम कंटिन्यूअस 6 months एवरी वन ऑफ अस वर बॉइलिंग। लंदन में रास्ता का तार मेल्ट हो गया। इटली में पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू फॉर वाटर। So is it because everything we have done it? So now this world has joined hand together. We will make the world nature positive by 2050. ये है, everyone has to play a role. इसलिए as I told, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ज़्यादा आए हो, हम लोग कम आए इस साइड में, फ्रंट साइड में कम बैठे हैं, आप लोग ज़्यादा हैं। Because we will join hand to keep the forest intact for our own benefit. Thanks, we want a forest like this. Everybody will be smiling, not that everybody will be crying. Thank you very much. Thank you, Chakraborty sir. And so you have given more focus on like fragmentation and the results and what our responsibility is to maintain that habitat, and also like transboundary effects and the collaborations that we will require. And honorable delegates, we have with us Dr. Asad Rahmani sir. So very good afternoon sir. And may I request CHD sir to felicitate Rahmani sir. It is our proud to have you with us sir. And sir, will you take your session now, or will you take some time? And yeah, sir. Okay. So may I invite Krishnamurthy sir to take his session. Then I will request our Rahmani sir to come to the dais for his presentation. So, good afternoon to all. At the outset, I thank Assam Forest Department and BTC for inviting me from Madhya Pradesh. I am from Madhya Pradesh and I am sharing here our experiences, how we restored the habitats. The theme of today's theme is that one is the conservation, another one is restoration, and the third one is the monitoring. So what I am going to share here is that how we conserved these habitats, wildlife habitats, because we have less than 10% of our PA areas and our protected areas in Madhya Pradesh. So these are all our biodiversity hotspots. So how we conserved is through voluntary village relocation. So that's I am going to show you a small film, 5 minutes. Later on, then I will just show around 5-6 slides about what we have done to improve the biodiversity and how we monitored these things. I think English है, हिंदी ठीक रहेगा sir? Mix, okay. So
Mayura. It's not playing. You have the video. Huh? You have to have the video. The presentation. Can you put this? Yeah, you can put it. Surrounded by hills big and small, these vast meadows make Satpura what it is today, a safe haven for wild animals. Surrounded by hills big and small, these vast meadows make Satpura what it is today, a safe haven for wild animals. But they exist because thousands of people forever left their home to give the forest a chance to thrive. This is their story. So these were the villages inside the tiger reserve which we have relocated in the last 15 years time. पहले हम पचमढ़ी के पास में बतकछा करके वन विभाग ग्राम में रहते थे। बाहर कहीं जाना है तो पर वो जंगल से गुजरना पड़ता था। शेर चीता जो भी जानवर है वो जैसे अपन मवेशी भी पालते थे तो जंगल जाते थे तो वो हमला करते थे। और एक बार तो हमारे घर के परिवार को मतलब शेर ने खा लिया। अंदर जो रहते थे सबसे बड़ी तकलीफ थी सर, एक तो मेडिकल की, आवागमन की, शिक्षा की और मार्केट वगैरह हर तरह की तकलीफें थी यहाँ पर। सिर्फ जब यहाँ पर अक्टूबर से लगा करके मई या 15 जून तक चलते थे तब इनकी आवागमन साधन उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि बजाय दिन ट्रक उसी बैठ के जाते थे बोहरा, वही जो ट्रक से बजा करके आ जाते थे। To ensure these simple village folk a better tomorrow, the Forest Department of Madhya Pradesh initiated talks to shift them outside the forest, where they could benefit from all the comforts of today's world. सबसे बड़ी बात होती है रिलोकेशन में कि कैसे उनको बेस्ट ऑप्शन दे करके उनको कैसे खुश रख करके रिलोकेट किया जाए, क्योंकि रिलोकेशन इज़ अ पार्ट, मतलब इसमें तीनों भगवान जब आपके साथ होते हैं तब रिलोकेशन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपको धन भी चाहिए, आपको प्लानिंग भी चाहिए, गांव वालों की सहमत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So far we have relocated 49 villages and 5,200 odd families from Satpura Tiger Reserve. This voluntary relocation is a win-win situation for both the park management and for the communities. जन्मभूमि तो सबको अच्छी लगती है सर, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी वहाँ की जगह। अब इधर आने के बाद बढ़िया महसूस कर रहे हैं, रोड लाइन से भी जुड़ गए, मार्केट है, हॉस्पिटल है, बिजली है। इधर के पूरे गांव बढ़िया है, बड़े बड़े घर अच्छे बना लिया, घर पक्के मकान बना लिया, धीरे धीरे ठीक लगने लगा यहाँ, बढ़िया है। फिर उधर से यहाँ ठीक है, घर से खुश है, खेती बाड़ी से खुश है, गांव रोड वगैरह से खुश है। Voluntary village relocation has transformed the lives of both people and wildlife. It feels as if life has sprouted from the soil at Satpura. The presence of tigers, leopards and sloth bears is a clear indicator. And the mighty gaurs have occupied the meadows. Today, Satpura has become a study center for relocation and is fast becoming a popular park amongst lovers of wilderness. This large-scale relocation work was achieved only due to support of public representatives, district administrations and hard work of park officials and field staff. But more than anything, it is because of the sacrifice of the local communities. So
ये एक स्टोरी है मध्य प्रदेश में जो हम लोग वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन से हम लोग जंगल एंड टाइगर रिजर्व्स को अच्छा किया. इसमें प्रमुख लोग हैं. सो एज मॉर्निंग ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन. टुडे इन कंजर्वेशन द इम्पॉर्टेंट पीपल आर communities. If the communities are happy, then you can protect the forest, you can protect the wildlife. So the future wildlife management also depends on how happily we are engaging with the communities and how much we are going to provide employment to these people through our conservation activities and through our ecotourism activities and other allied activities. So that is the theme of our entire voluntary village relocation process. So I think I will skip most of the slides now since you have seen this. So ये सतपुड़ा का जो लैंडस्केप है, टिपिकल लैंडस्केप है. वी हैव अ ह्यूज वाटर बॉडी, देन वुडलैंड, देन हिल्स ऑल्सो. So this epitomizes the Satpura landscape, जो हमारा typical landscape है. Water है, woodland है, then hills है. So it's a beautiful landscape in the central India, and of course हम आपकी जो हिमालयन लैंडस्केप से कंपेयर कर नहीं कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट, दिस एंटायरली डिफरेंट सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड दिस हिमालयन लैंडस्केप. मॉर्निंग भी मैंने 1 घंटा ही पार्क देखा. सो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो, लेकिन हम जो शेयर करेंगे जो मध्य प्रदेश में हमने किया एंड पर्टिकुलरली सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. सो मेरा जो प्रेजेंटेशन में मैंने रखा था एक इंट्रोडक्शन, वॉलंटरी रिलोकेशन मैंने फिल्म दिखा दिया. हैबिटेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम जो कर रहे हैं वहाँ हमारा मध्य प्रदेश में, मैं उसको बता दूंगा, और देन हाउ वी आर मॉनिटरिंग इट. सो इफ़ यू सी मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों के पास में लगभग 7 टाइगर रिजर्व्स है. वी हैव 11 नेशनल पार्क, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मध्य प्रदेश ऑलवेज फोर फ्रंट लीडर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट. मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के कंजर्वेशन टेक्निक्स है विच स्टार्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड मोर सो फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व एंड ऑल्सो फ्रॉम सतपुड़ा एंड पन्ना टाइगर रिजर्व एंड ऑल. यू टॉक अबाउट रिलोकेशन, it started from Kanha. You talk about rewilding, you talk about community management, you talk about buffer, you talk about tiger rewilding, and you talk about any conservation. Most of them started from Madhya Pradesh and it has been adopted in across all the parks also in many states also. So ये मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का लैंडस्केप है. इसमें छत्तीसगढ़ भी है. So 7 टाइगर रिजर्व्स है. बाकी ये हैबिटेट है, ये कॉरिडोर से कनेक्टेड है. पॉइंटर नहीं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सेंटर में है. सो वी हैव अ गुड कनेक्ट with the Melghat Maharashtra and Pench Kana up to Achanakmar तक है. So ये सेंट्रली लोकेटेड है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आप देखेंगे इंडिया में सबसे सेंट्रल पोजीशन में है. So the tiger population and wildlife conservation in this park is very important for conserving the entire wildlife in the central Indian landscape including Maharashtra and Madhya Pradesh. सो ये हमारा पार्क में 3 प्रोटेक्टेड एरिया है. नेशनल पार्क, सेंचुरी, 2 सेंचुरीज है, बोरी सेंचुरी एंड पचमढ़ी सेंचुरी. जो ब्लू एरिया देख रहे हैं ये तवा का बैक वाटर है. ये 230 स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडी इनसाइड द टाइगर रिजर्व. इसमें कोई ह्यूमंस नहीं है, नो फिशिंग अलाउड है, केवल निस्तार फिशिंग अलाउड है. बाकी अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली इनसाइड द कोर एरिया. सो ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हमको देता है एंड ये सराउंडेड बाय बफर एरिया. सो ये येलो कलर कोर है. ये हमारा 1332 स्क्वायर किलोमीटर कोर आता है. सो टोटल एरिया ऑफ द पार्क इज 2133 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. सो बोरी रिजर्व में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश इंडिया में पहला रिजर्व फॉरेस्ट ये बोरी रिजर्व है, वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है. मध्य प्रदेश में 1865 में डिक्लेयर हुआ. यही पार्क है, वहाँ पहला फायर स्कीम प्रिपेयर किया पूरा एशिया का बाय ब्रिटिशर्स. एंड यही जगह है जो सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ. एंड यही प्लेस है पहला वर्किंग प्लान, आप लोगों को मालूम है जो कंजर्वेशन प्लान बनता है, वर्किंग प्लान टेरिटोरियल फॉरेस्ट का, वो पहला यहाँ पर चालू किया है. सो बाकी डिटेलिंग में नहीं बताऊँगा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. सो ये कोर जोन डिक्लेयर्ड है एंड हमारा टाइगर रिजर्व 2000 में आया. अब इको सेंसिटिव जोन भी नोटिफाइड है. इट्स अ वेरी गुड हैबिटेट फॉर ऑल द कार्निवर्स, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर एंड वाइल्ड डॉग्स. एंड मेजर प्रे यहाँ पर है आपका सांबार एंड गौर कंट्री है. चीतल कम है. अब धीरे धीरे रिलोकेशन के बाद हम लोग कर रहे हैं. एंड देर आर सम यूनिक स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज वहाँ पर ये है जो बारहसिंगा यहाँ पर आप बात कर रहे हैं. हमारा यहाँ पे 8 ग्राउंड बारहसिंगा है. हम सक्सेसफुली कान्हा से ट्रांसलोकेट करके एक सेकेंड होम हमने क्रिएट किया है. हम रिलोकेट किया 98, अब हमारा पास 200 से ज़्यादा हो गया. अगेन इट्स अ सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम हमने किया. जो यहाँ पर यूरेशियन ऑटर एंड स्मूथ कोटेड ऑटर दोनों है. पर्टिकुलरली सतपुड़ा देखेंगे ये हिमालयास एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में है. इकोलॉजी से देयर इज ए हाइपोथेसिस, सतपुड़ा हाइपोथेसिस. इट्स ए कनेक्ट जेनेटिक हाईवे कनेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयास.
There are 43 species of Himalayas, Western Ghats is common with Satpura, and 23 species of Himalayas common with Satpura. So इसलिए वो सेंट्रल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडस्केप में आ रहा है. So ये हैबिटेट में जो कंजर्वेशन का पहला इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन है. जो आप सतपुड़ा में देखेंगे वी हैव अराउंड 180 पेट्रोलिंग कैंप्स. प्रोटेक्शन का मतलब केवल जंगल का प्रोटेक्ट करना नहीं, इससे साथ साथ लोगों को रोजगार देना भी है. आज अब पार्क में हम लोग लगभग 1000 लोगों को एम्प्लॉय किया, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है. कंजर्वेशन से उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है प्रोटेक्शन नाम पे. मैं आई एम नॉट काउंटिंग द टूरिज्म अदर होटल में काम कर रहे होने, केवल पार्क डायरेक्टली हम 1000 लोग हैं वहाँ पर. सो इतने लोगों को दे रहे हैं. सो 180 पेट्रोलिंग कैंप, वॉच टावर्स, पेट्रोलिंग कैंप्स, बैरियर्स, देन अदर ऑफिसर्स. सो इतने लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. ये तभी आपका हैबिटेट प्रोटेक्ट होगा. जब कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट देंगे नेचुरली वो जंगल तरफ नहीं जाएंगे. सो ये रिलोकेशन है. आप देखिएगा ये पार्क है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इतने विलेजेस हमने रिलोकेट किया. पहले ये पूरा विलेजेस था. सो नाउ वी हैव मेड completely more than 1500 square kilometer inviolate in central Indian landscape. No park has got this much area. So ये हमारा एक अचीवमेंट है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. इट्स नॉट ओनली इन सतपुड़ा, वी हैव रिलोकेटेड मेनी विलेजेस इन अदर पार्क्स आल्सो. सो फार इन मध्य प्रदेश में वी हैव रिलोकेटेड मोर देन 210 विलेजेस. सो करंटली हमारा फोकस है नवरादे ही है, जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, उसमें हमारा रिलोकेशन ज़्यादा चल रहा है. यहाँ पर आप देखिए हम 49 विलेजेस रिलोकेट किया, 5130 लोगों को रिलोकेट किया है. सो 49 विलेजेस, उसमें 30 फॉरेस्ट विलेजेस था, 19 रेवेन्यू विलेजेस का रिलोकेट किया हम लोगों ने. सो ये रिलोकेशन भी अगेन कंसोलिडेशन एंड कंजर्वेशन कैसे होगा. रिलोकेशन जो हमने किया है इन सबको हमने रेवेन्यू फॉरेस्ट के सीमा में बसाया है. ऐसे नहीं कि बीच में हमने हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन करवाया. सो यही एक चीज़ है. हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर से जब भी आप करना तो इसको एक ध्यान दीजिएगा. जब भी रिलोकेट करेंगे क्लस्टर में करिए एंड एडजस्ट में करिए रेवेन्यू फॉरेस्ट, ताकि उनका लाइफ में फॉरेस्ट भी रहेगा एंड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड दे एक्सेस टू ऑल दैट नियर बाई टाउन्स एंड फॉर अदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़. वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें. सो जब हमने रिलोकेट कर दिया उन एरिया में हम लोग ने ग्रासलैंड के रूप में डेवलप किया. अब अल्टीमेटली the relocation का objective is, one is the rehabilitating the people, another one is creating invalid area in the inside the park. So invalid करने के बाद आपको उसको habitat के रूप में convert भी करना है. वो habitat conversion हमने जैसे ये आप देख रहे हैं कि पूरा brushwood वगैरह निकलवाया है, फिर वो weeding होता है हर महीने हर साल. So we keep it as a pure grasslands with palatable grasses and water in plenty. So that ensures the richness of biodiversity and increase in population also. सो ये आप देखेंगे नटशेल में हम लोग पूरा अभी 2003-4 से हमारा रिलोकेशन चालू हुआ, लेकिन लास्ट 10 साल में मेजॉरिटी ऑफ वॉलंटरी रिलोकेशन हुआ है. हमने 520 करोड़ रुपए स्पेंड किया रिलोकेशन में. इसमें हम लोग लगभग 13,000 को जो ग्रामीणों को बाहर विस्थापित किया गया, वैसे 13,000 कैटल को भी बाहर किया. इतना प्रेशर हमने कम किया तो वैसे ही हैबिटेट कंजर्व हो गया हमारा. सो इसके आप नटशेल में अब देखिएगा क्या किया हमने. 11,000 हेक्टेयर ग्रासलैंड में ऐड किया. पहले ग्रासलैंड ऑलमोस्ट जीरो था सतपुड़ा में. सो अब 11,000 हेक्टेयर एरिया हमारा इसमें आया. हमने रेवेन्यू लैंड था 5,000 हेक्टेयर हम उनको नोटिफाई किया आरएफ में, बट हमने विस्थापन के लिए लगभग 4,000 हेक्टेयर हमने डाइवर्ट किया. लगभग 10,000 एकड़ जमीन गांव वालों को हमने FCA में डाइवर्ट करके रिलोकेट करवाया. सो इसलिए गांव के लोगों को जो अच्छी ज़मीन ये सब देने मुश्किल हुआ, ईजी हुआ. सो ये एक विलेज है. लास्ट ईयर 2022 में हम लोग 2 साल पहले रिलोकेट किया. वो 6 महीने में ऐसे परिवर्तन हो जाता है. दिस इज़ व्हाट हैबिटेट मैनेजमेंट एंड आपको हैबिटेट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसमें ये नक्शे में दिखता है कि 6 महीने का फ़र्क कैसे है. सो ये जो गांव का हम लोग ने रिलोकेट किया, देखिए उनका खेती देखिएगा कितना बढ़िया. एक फुटबॉल ग्राउंड जैसे खेती है, फर्टाइल लैंड्स है, गुड इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल, मकान सब बना के दिया है. सो ये सब पॉसिबल है कि इसका पॉलिटिकल सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स का विलिंगनेस एंड ऑल्सो द ग्राउंड लेवल स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड, हमारा EDC अध्यक्ष एंड लोकल कम्युनिटीज, दे ऑल सपोर्टेड द वॉलंटरी रिलोकेशन. सभी ने, एवरीबडी बिलीव एंड फेल्ट रिलोकेशन हैज रियली हेल्प द कम्युनिटीज. So this is what we achieved in Madhya Pradesh, and Satpura is a model for relocation in the entire state and also for many states now. So ये सब चीज़ हमने अचीव कर लिया है. मैं ये नहीं बता दूंगा, ये हैबिटेट में भी मैं जस्ट फोटोज दिखाना चाह रहा हूँ. ये जो रिलोकेट द विलेजेस है ये सब अब हमारा ग्रीन कलर दिख रहा है. ये वुडलैंड्स के बीच में हमारा मोसाइक पैटर्न ऑफ ग्रासलैंड्स क्रिएट हुआ. सो इससे हमारा वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छा वहाँ इंक्रीज हो रही है अभी. सो ये है कि जो आप देखिएगा ग्रासलैंड्स, ये पूरा पुराना विलेजेस था, आज कैसे दिख रहा हो आप देख लीजिएगा. इसके लिए बहुत
It's again there is a detailed planning है grassland management के we involve the forest officers, then we involve the agriculture scientists, then we involve other people also to train my staff and all to identify palatable grasses, non palatable grasses, wild legumes कौन सा है, ये सब चीज़ identify करना, उसको पूरा ऐसे एक मोसाइक टाइप आपको मेंटेन करना पूरा. there is no weed, there is no brushwood, ये सभी चीज़ आपको निकालते रहते हैं. इस प्रकार का हम लोग ने मेंटेन किया है. ये ब्रशवुड है, जैसे आवर सीनियर आल्सो टॉक्ड अबाउट द ब्रशवुड एराडिकेशन. ये जो रिलोकेटेड विलेज में आपको ब्रशवुड होगा, इसको अगर आप निकालेंगे नहीं, वो हैबिटेट पूरा वुडलैंड बन जाएगा. लेकिन आपको डिसाइड करना है क्या वुडलैंड चाहिए, आपको ग्रासलैंड चाहिए. लेकिन आपका मैनेजमेंट का इसका ऊपर आता है. सो हम लोग ऐसे पूरा ब्रशवुड निकाल के कम्प्लीटली क्लियर ग्रासलैंड के रूप में मेंटेन करते हैं. लेंटाना इज अनदर big invasive species in central Indian landscape. हम लोग every year we are trying to remove the lantana. Again इससे प्रोटोकॉल है, 3 साल का करेंगे. अगर lantana हटा देंगे तो धीरे धीरे वो ग्रासलैंड बन जाता है. सो ये आइपोमिया भी वाटर बॉडीज में हमारा एक प्रॉब्लम है, आइपोमिया कॉर्निया, इसको भी हम लोग पूरा धीरे धीरे निकाल रहे हैं. ये सब जगह उसको इससे हैबिटेट को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं. ये डेटा मैं नहीं बताऊँगा. सो ये वाटर बॉडीज आप देख लीजिएगा. हर एरिया में हम लोगों ने तालाब बनाया, स्टॉप डैम बनाया, डाइक्स, बिकॉज जो बैक वाटर का पानी है उसको डाइक्स से रोकना आसान है. अगर विगत 6 साल में देखेंगे तो हम लगभग 200 डाइक्स, स्टॉप डैम्स एंड वाटर पॉन्ड्स इतना बनाया. सो इतने वाटर बॉडीज अवेलेबल है. सो हम लोगों ने बारासिंगा भी ट्रांसलोकेट किया, क्योंकि हैबिटेट आपने क्रिएट किया, देन यू हैव टू क्रिएट इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी थ्रू ट्रांसलोकेशंस आल्सो. सो ये एक इनोवेटिव स्कीम में हमने बारासिंगा को काना से लाके यहाँ रिलीज़ किया. अब हम 98 एनिमल्स लास्ट 8 ईयर्स में लाया. अब हमारे पास 200 से ज़्यादा है. इसके साथ साथ हम लोगों ने प्री ऑगमेंटेशन भी किया. मध्य प्रदेश इज वन स्टेट वेयर मास ट्रांसलोकेशन ऑफ ungulates इज हैपनिंग एवरी मंथ देयर, पर्टिकुलरली इन द विंटर मंथ्स. सो चीतल को हम पेंच टाइगर रिजर्व से अभी तक लगभग 1900 चीतल को लाके हमने यहाँ रिलीज़ किया है. इससे हमारा जो ग्रासलैंड्स है वो इम्प्रूव हुआ है. बैटरी इज लो. तो देन अगेन पूरा पार्क में सोलर पंप से हम लोगों ने हैबिटेट का इम्प्रूवमेंट वर्क्स में किया है. आप फायर भी एक इम्पॉर्टेंट है आपका हैबिटेट मैनेजमेंट में. आपका कंजर्वेशन करना इसमें इम्पॉर्टेंट है. फायर ना हो जंगलों में. आप देखिएगा हमारा क्योंकि वॉलंटरी रिलोकेशन हो गया, कम्युनिटीज़ के साथ मिलने से हमारा पर ईयर का जो फायर अफेक्टेड एरिया ये जस्ट 350-400 हेक्टेयर, इससे ज़्यादा नहीं है. सो वी आर हैप्पी अबाउट इट, बट वी कैन नॉट टेक लिबर्टी ऑल्सो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा इट्स अ चैलेंज. हम रेगुलरली फायर में बहुत मतलब फोकस करते हैं काम करने में. मॉनिटरिंग में आप देखिएगा हमारे पास ड्रोन टीम है. ड्रोन टीम से हम लोग पूरा फायर ये टाइगर मॉनिटरिंग भी होता है जो रीवेल्डिंग सेंटर्स में है. एनिमल रिलीज प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं, वाटर बॉडीज़ को करते हैं. ये सब चीज़ ड्रोन टीम के माध्यम से करते हैं. दूसरा जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है, ताकि आपका स्पीसीज कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है. आप ये देखेंगे कि ये जो अपना एम स्ट्राइप डेटा से एवरी मंथ आप असेस कर सकते हो हमारा जो स्पीसीज टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज़ हो रहा है. लेपर्ड का है या स्लॉथ बियर का है, डोल का है, गौर का है. सो ये सभी चीज़ आप कर सकते हो. अगेन अनदर मॉनिटरिंग व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मॉनिटरिंग इवन रिलोकेटेड sites where we relocated the villages, so we have converted into grasslands. So what kind of animals are visiting this area through camera traps and all करके ये भी आप देखेंगे. almost all the tiger relocated areas में हमारा tiger, leopard presence सब है. So this is how the density is also changing over the years. It's increasing. The tiger, leopard population is increasing. So ये AET data 2022 का AET data में आप देखिएगा जो टाइगर डेंसिटी जहाँ रिलोकेटेड मैप ओवरलैप करेंगे तो वहीं एरिया में ज़्यादा हमारा टाइगर डेंसिटी है, वहीं ज़्यादा लेपर्ड डेंसिटी भी है. सो वो लास्ट 12-14 ईयर्स में हमारा ग्रोथ देखिएगा. 13 टाइगर्स थे, नाउ वी आर 62+ एंड नाउ वी आर काउंटिंग मोर, इट्स मे बी अराउंड 75-80 नाउ एंड इट्स इंक्रीजिंग. सो एंड ऑल्सो मी रैंकिंग है जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूशन रैंकिंग में वी आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आवर प्रोटेक्शन, आवर रिलोकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. So we were below 10 and we are moved to second position in the entire country among 51 tiger reserves. So through voluntary relocation and habitat management, we have increased the inviolate area more than 1,500 square kilometer, and our ungulates and tiger numbers are increasing, and forest offense cases reduced drastically inside the tiger reserve.
and biotic pressure is also not much in the park, and less man-animal conflict, and it is one of the ideal wildlife habitat in the central Indian landscape. So that's all I want to say, and there are many NGOs, they also support us in conservation, so I'm acknowledging those people, those NGOs also. And if you see over the years how Satpura has performed, and we are getting a lot of national recognitions for our good work, and we have been ranked as the second best park in the last ME. So that's all from me. If you have any question, I will answer. Thank you very much. Thank you, Krishnamurthy sir. So you have highlighted like the wonderful, like visible changes and the initiatives and the results. So you can follow us on Insta also. We keep on posting the important conservation activities in Insta page. This is our official handle. Thank you. Thank you. So we'll discuss again when we have some questions. I definitely will have questions. Sir. फाइल दिखाइए सर, कौन सा असल में 2 लेक्चर है, मैं देना चाहता हूँ ये वाला, ये अच्छा रहेगा, ज़रा सा डिफरेंट है आपको बोला हैबिटेट के लिहाज से. I'm putting it here, sir. I'm putting it here. Yes. कैसे करेंगे ये नीचे? I'll help you, sir. Just a second, sir. Okay. So our next speaker is Dr. Asad Rahmani sir. Let me give a very brief information and about him, because he is the former director of Bombay Natural History Society. Also, he has written 26 books and 160 peer-reviewed journal papers and 90 book reviews. And those who know Rahmani sir, he's a like guru to me, and I'm also a sir, Shishya hu aapka sir. So thank you, sir. Sir, yeah, you can take it forward, sir. This one. Okay, यहाँ से ये है ना? ये सर, दोनों वो. Namaste, thank you for calling me, and thank you the forest department and all other people, organizers. जब आपने बताया कि I have to speak on habitat, एक मैंने लेक्चर वेटलैंड पे भी किया है, वो बना हुआ है, मगर मैं सोचा कि कोई नई चीज़ पे बोले हैं, जो बस वो तो सभी बोलते रहते हैं हैबिटेट बचाना है, बचाना तो है ही, मतलब किसी जो सब बैठे हुए हैं सभी बचाना चाहते हैं, और बहुत से सुने हैं, बहुत अच्छे अभी कृष्णामूर्ति साहब ने वंडरफुल लेक्चर दिया है. तो मैं असल में ये आपको एक नई चीज़ पे बोलना चाहता हूँ. काउंटिंग बर्ड्स, जनरेशन एमनीसिया. एमनीसिया किसे कहते हैं? भूल जाना. और मैं आपको ज़रा सा वैसे बताऊँगा इंटरेस्टिंग बना के. ये आपने तस्वीर पहचानते हैं आप? मैं भी बैठा हुआ हूँ इसमें, सालिम अली बैठे हैं और हमारे गुरु बैठे हैं प्रोफेसर साहब. मैं जब सबसे पहले 1974 में डॉक्टर सालिम अली से मिला भरतपुर में, सापन मोरी एक जगह है, एंड हमीदा सईद जफ़र थी. आई वॉज देयर इन अलीगढ़ एट दैट टाइम, आई वॉज डूइंग PhD. तो उनके साथ गए थे. द फर्स्ट थिंग विच वी सेड, एंड जब मैं गया वहाँ पे तो लाखों चिड़ियाँ थी. हमें जैसे कहते हैं बौखला जाते हैं ना, वो वाली हालत थी. बौखलाना, यू नो दैट, जस्ट गो क्रेजी. Oh, so many birds. And the first thing which Dr. Salim Ali told Hamida, पढ़िए आप हमीदा, अब चिड़ियाँ कोई कम हो गई हैं. ये हंसने की बात तो है वहाँ पे, है ना, मगर आप देखिएगा उसके बाद उनके ज़माने में जब वो 30s 40s में जाते थे, there were many more birds.
हम जब देख रहे थे, हैं, आई वॉज 24 ईयर्स और 23 ईयर्स ओल्ड, अरे कितनी चिड़ियाँ, हज़ारों, ये देखिए ये फ्लॉक था। और सालिम अली क्या कह रहे थे, अब चिड़ियाँ ज़रा कम हो गई हैं। आप लोगों ने, कित्तों ने, हमारी उम्र का तो कोई भी शायद नहीं होगा यहाँ पे, कित्तों ने लैंप पोस्ट पे आपने इंसेक्ट देखे हैं? कित्तों ने देखे होंगे? हजारों लाखों इंसेक्ट हुआ करते थे। मुझे याद है जब बड़े बड़े, मेरे भी बाल कभी हुआ करते थे, तो अगर नीचे से निकले तो इंसेक्ट इसमें आ जाते थे बचपने में, और इवन इन मच लेटर। आज कहाँ गए इंसेक्ट? पूरे एरिया में इंसेक्ट नहीं है, हैं? कोई अब नई जनरेशन जो है वो दे डोंट नो दे इंसेक्ट। पहले ज़माने में हमें याद है, हमारे फादर कहते थे, जैसे लॉन में लगा होता है तो बल्ब को ऑफ कर दो कि इंसेक्ट बहुत आ रहे हैं। आज आपको ज़रूरत नहीं है इसको ऑफ करने की। द इंसेक्ट्स आर गॉन। 60% of the insects of the world have disappeared, and possibly many more in India also and elsewhere. I'm talking about that. इंसेक्ट भी ख़त्म हो गए। साहब गिद्ध कहाँ चले गए हैं? जब मैंने बहुत सर्वे किए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हैं, अभी 20 साल पहले तक जब भी मैं जाता था सर्वे करने और वैसे जाता था स्टडी करने, तो हाँ चिड़ियाँ तो ठीक हैं, ये है, मगर आप बताइए गिद्ध कहाँ गए? लौट फिर के वो क्वेश्चन आ जाता था, बिकॉज लोगों ने गिद्ध देखे थे, हैं। अब मैं जाता हूँ तो कोई नहीं पूछता है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू रियलिटी। यू डोंट हैव गिद्ध, दिस इज़ अ न्यू, ये लोगों ने, नई जनरेशन ने तो देखा ही नहीं है, हैं। हमें खुद ही याद है कि 1985 में फर्स्ट टाइम जब मैं आसाम आया था, तो जितने भी कार्केसेस होते थे, गिद्ध होते थे और ग्रेटर एडजुटेंट होते थे। उसी के बाद मैंने रिसर्च की, और ये बैठा हुआ है हमारा स्टूडेंट हिलोल, है, इसने PhD की ग्रेटर एडजुटेंट, उसी से इंस्पिरेशन मिला था। ग्रेटर एडजुटेंट भी होते थे, गिद्ध भी होते थे। एक्चुअली ग्रेटर एडजुटेंट यूज्ड टू वेट आउटसाइड, देयर यूज्ड टू बी सो मेनी गिद्ध, बिकॉज दे विल नॉट कम इनसाइड। अब कहाँ गए गिद्ध? बिल्कुल नई जनरेशन तो जानती नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट सीन इट, दे डोंट मिस इट। पुरानी जनरेशन मिस करती थी, अब वो भी ख़त्म हो गए। इसको कहते हैं, आपको ये मालूम है, टॉक 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 टॉक। किसी भी फॉरेस्ट में आप चले जाइए समर में, पर्टिकुलरली फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, लॉन्ग टेल नाइटजार बोलेगी, ऐसा लगेगा जैसे पेड़ काट रहा है। हम लोग दुधवा में काम कर रहे थे, माई स्टूडेंट रविशंकरन, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, ही वॉज वर्किंग ऑन द बंगाल फ्लॉकिन। और कभी कभी सोना नहीं, 20 बोला करती थी सटियाना रीजन में। अभी 2 साल पहले मैं गया है, उसी गेस्ट हाउस में मैं रुका, गेस्ट हाउस की हट थी, और मैंने 3 आवाज़ें सुनी सिर्फ इसकी, है। और जो नए लोग हैं, अरे भैया बहुत सुनी थी, मैंने बहुत आवाज़ सुनी थी, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट वाज अर्लियर। इसको कहते हैं जनरेशनल एमनीसिया। एक बड़ा मशहूर है KL सहगल का, आप बहुत से होंगे KL सहगल के, वो चहचहाती बुलबुलें जाने गई कहाँ, हैं। अगर नहीं सुना है तो ज़रूर आप सुन लीजिए। KL सहगल लीजेंड है, इज अ भारत रत्न ऑफ इंडिया, है, बड़ा मशहूर गाना है। और ये भी 60-70 साल पहले था। ये तो ज़रा ड्रामेटिक है, उस ज़माने में इतनी बुरी हालत नहीं थी ये नहीं था, है। अब बुलबुलें कहाँ चली गई इतनी, जैसे हुआ करती थी। तो अगेन दिस इज बिकमिंग अ, इसको कहते हैं, आप लोग स्टूडेंट पर्टिकुलरली नोट कर लीजिए, ये नया सब्जेक्ट है, नया, बहुत कम लोगों ने इसमें सुना भी होगा, कि इट इज़ नोन एज अ जनरेशनल एमनीसिया। द टर्म वॉज कॉइन्ड अ फ्यू ईयर्स अगो इन अ पेपर बाय पीटर ने, हैं। जनरेशन कंसिडर्ड हाउ इट फर्स्ट एक्सपीरियंस इन प्लेस एज इज ट्रू बेसलाइन। वो हमारे लिए बेसलाइन है, जो हमने देखा है वो बेसलाइन हमारी है ना, वो है। और बेसलाइन हर साल कम होती चली जा रही है। कम से कम कुछ स्पीशीज़ के, ज़्यादातर स्पीशीज़ के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए होगा, ऐसी बात नहीं है, मगर यह है कि ये जनरल ट्रेंड है वर्ल्ड का, कि बेसलाइन लोगों की है। एनवायरमेंटल जनरेशन, जो हम लोगों ने आज जो एनवायरमेंट देखा है, जो दिल्ली और गाज़ियाबाद या गुवाहाटी जो आज हम देखते हैं ना, वही समझते हैं ऐसे ही होगा गुवाहाटी। 50 साल पहले तो जाने के बहुत से पेड़ थे और बहुत सी और चीज़ें थी। इसी तरह से कल्चरल एमनीसिया भी है, जो आज हम कल्चर देख रहे हैं वही तो हम समझते हैं कि यही सब था, जाने कितनी चीज़ें हो गई। और इसको मैंने अब वाइल्ड लाइफ स्टेटस एमनीसिया कहता हूँ, कि जो अभी तक मैंने बताया उसको कहते हैं। एक हमारे एक और गुरु थे, हैं,
लवकुमा खाचर हैं, वो थे जहाजदान, एक छोटा सा वो है, व्हाट यू कॉल इट, नॉट कस्बा, जैसे प्रोक्टरेट जिसे कहते हैं ना, जैसे तहसीलदार से बड़ा, उसके वो उन्होंने मुझे बताया जहाजदान के वो लवकुमा खाचर साहब ने कि जब मैं जहाजदान से राजकोट जाता था, वो 60 किलोमीटर है, मैं उस ज़माने में 50 से 60 ब्लैक शोल्डर काइट देखा करता था. He was a bird watcher from beginning itself. कुछ साल 2015 में मेरा एक दोस्त है मनीष, उसने मुझे पूछा साहब ने बहुत सी ब्लैक शोल्डर काइट देखी. मैंने कहा कितनी देखी? कहें 3 देखी हैं. मनीष के लिए 3 बहुत थी हैं. 40-50 से 3 पे आ गए हम लोग हैं. ठीक है. और अभी मैं पिछले महीने गया था, नॉट इवन 1 ब्लैक शोल्डर काइट बस. ये नहीं है कि नहीं खत्म हो गई टोटल, मगर सिचुएशन चेंज होती जा रही है ना. तो ये बिल्कुल जैसे हो गया जनरेशन है. ईच जनरेशन द बर्ड्स आर मिसिंग एंड डिक्रीजिंग. What a generation ago would be considered as rare is now common here. जब मैं भरतपुर गया अभी 3 साल पहले जब मैं गया था, तो मैंने 10% बर्ड देखी, जो what I saw it in 1974. उसके बाद भी I worked in भरतपुर for couple of years, which was 10% थी. मगर जो लॉन्ग लेंसर्स होते हैं ना, मैं उनको लॉन्ग लेंसर्स कहता हूँ, जिनको कोई नेचर से मतलब है नहीं, फोटो खींचना है उनको, वो बड़े खुश हो रहे थे, उछल रहे थे, ओह कितनी चिड़ियाँ हैं. एक किंगफिशर देख लिया तो 10 लेंस आ गए थे. बिकॉज उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ तो 10 किंगफिशर हुआ करते थे. अब काबर ताल एक है बिहार में, बहुत बड़ा झील है, रामसार साइट है. वहाँ पे लाखों चिड़ियाँ होती थी. 1964-65 में जब BNHS ने बर्ड रिंगिंग शुरू किया था, कैन यू डू इट लेटर, जब शुरू किया था उन्होंने, तो वो लाखों वहाँ पे बर्ड रिंगिंग शुरू की थी BNHS ने. और वहाँ पे 300-400 चिड़ियाँ रोज आना मार्केट में आती थी ट्रैप होके हैं. आज 300 चिड़ियाँ का पूरे काबर ताल में नहीं मिलेंगी. ये हालत हो गई है हम लोगों की. ये सिचुएशन होती जा रही है. बर्ड्स आर इन बिग ट्रबल. 3 बिलियन बर्ड्स आर मिसिंग. ये अमेरिका की रिपोर्ट है. बड़ा अच्छा पेपर साइंस में पब्लिश हुआ है ये पेपर, और ये सभी को पढ़ना चाहिए. नोट कर लीजिए इसका. साइंस 3 ये 2019 में पब्लिश हुआ है पेपर. उन्होंने किया है कि कंपेयर टू 1970 डेटा, मोर देन 3 बिलियन बर्ड्स आर मिसिंग. इतनी डिक्रीज हो गई है. तो ये हम लोगों की सिचुएशन होती जा रही है. इसी तरह से यूरोप में उन्होंने कहा कि इन 40 इयर्स का उनका डेटा जो एनालिसिस उन्होंने किया है, उनको पाया कि ऑलमोस्ट 30% बर्ड्स आर गॉन. ये भी बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर से है, और उसके और भी स्टडीज़ हैं. ये नहीं कि यही रिसर्च पेपर है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ फ्यू ऑफ देम, एंड देयर आर मेनी अदर पेपर्स ऑल्सो. इन्होंने कोई दे कलेक्टेड डेटा फ्रॉम 200 मॉनिटरिंग साइट्स अक्रॉस 28 कंट्रीज. 37 ईयर्स का डेटा है, एंड दे फाउंड दैट 550 मिलियन बर्ड्स आर गॉन. डिक्लाइन, और कुछ स्पीशीज की बर्ड्स की डिक्लाइन इज मच मोर देन द अदर हैबिटेट्स. फॉरेस्ट की कहीं डिक्लाइन इतना नहीं हुआ है, बिकॉज फॉरेस्ट कवर भी यूरोप में भी इंक्रीज हुआ है, इंडिया में भी अच्छी पोजीशन है. जैसे अभी आपने कृष्णा मूर्ति साहब ने बताया है, बहुत अच्छा हैबिटेट है कुछ की फॉरेस्ट. मगर ग्रासलैंड की स्पीशीज का बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. इंडिया का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग पास. अब होने लगा है. पिछले ये तो 40 साल की इंफॉर्मेशन है ना, और बड़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है. तो हमारे यहाँ भी अब होने लगा है. तो देखिए 53% डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रासलैंड बर्ड्स इन 1970. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 122 कंट्रीज पार्टनर है. 122 कंट्रीज में पार्टनर है. हिंदुस्तान में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज़ अ बर्ड लाइफ पार्टनर, और हम भी उसके काउंसिल में रह चुके हैं कई साल, कोई 12 साल कौन से बर्ड लाइफ के.
तो बर्ड लाइफ ब्रिंग्स आउट एवरी 2 years दे ब्रिंग आउट अ स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, और ये भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसको भी है स्टूडेंट, खास तौर से प्लीज़ नोट इट डाउन। ये स्टेटस 2022 का स्टेटस है, और उसमें आप देख सकते हैं 73% of the species were estimated to have fewer than 10,000 individuals हैं। तो ये, और इसी तरह से इंडिया का जो है, इंडिया का भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है पिछले साल। 146 बर्ड स्पीसीज को शो द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, and of these 80% are declining fast and nearly 50% are going at a very rapid rate। ये रिपोर्ट है, आप ये नोट कर लीजिए, ये भी डाउनलोडेबल है, वेबसाइट पे है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स लास्ट ईयर ये रिलीज हुई है। दिस इज बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट 12 years ऑफ डेटा, कलेक्टेड डेटा, और बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट किया है। तो वो थाउजेंड्स ऑफ 1 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं इसमें, और nearly 40,000 people have contributed to that. They also show that common birds are not more common. Even the Indian roller, जो नीलकंठ जिसे कहते हैं, आसामीज में क्या कहते हैं, वो नीलकंठी कहते हैं, even that has become very uncommon है, बहुत जहाँ नज़र नहीं आता। वही वाला जैसे ब्लैक शोल्डर काइट वाला 50-60 से लेके 2-3 पे आ गए हैं। इसी तरह से जो हम लोग आज मैं समझता हूँ कि मीडिया में और सोशल मीडिया में ज़्यादा बर्ड्स हैं जो एक्चुअल में होती हैं, इसलिए फोटोग्राफ खींचती रहती है। Some species have got better data, better population in social media than actual population in the world. अब आप ये देख लीजिए कितनी है। I will not go into the detail। मैं ये स्टूडेंट जो बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कीवर्ड दे रहा हूँ। Now it is for you to use those keywords to find out much more detail from different ये कुछ ये इसी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की है। देखिए ज़्यादातर स्पीशीज का डिक्लाइन है इसमें। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, द सेम थिंग इज हैपनिंग। वी आर वेरी गुड इन डिक्लेरेशन, पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन। अभी फैनफेयर से हुआ कि हम लोगों ने 5 और रामसार साइट्स डिक्लेयर कर दिए, 5 और हो गए, अब 75 से ज़्यादा 80 हो गई हैं रामसार साइट। ये लेटेस्ट मैप है 80 रामसार साइट्स का है। उनकी हालत क्या है? आपके यहाँ दीपोर बिल भी तो रामसार साइट है? डिक्लेयर कर देना सब कुछ नहीं होता है। आप जैसे कृष्णा मूर्ति साहब ने काम किया या मध्य प्रदेश ने काम किया है, उसका रेस्टोरेशन भी तो ज़रूरी है। अब आप जाके देख लीजिए, डंप यार्ड है, ये जो आपका जो है डंपिंग ग्राउंड है, आपका जो रामसार साइट है ये। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने 10 रामसार साइट, बड़ा हंगामा मचा, अरे 10 हो गई हमारे यहाँ। मैं कहता हूँ 10 में से 8 जो है ना, दे शुड बी इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, बैड रामसार जिसे कहते हैं ना, डिटेरियोरेटेड रामसार साइट। हम लोग डिक्लेयर करने में बहुत खुश है, मतलब फैनफेयर बहुत होना चाहिए ना, हेटेट लगा के। हैं एक बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया है, अमृत सरोवर। आपके यहाँ भी होगा शायद, मुझे तो नहीं मालूम है। अमृत सरोवर है, बहुत अच्छा। आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड, मगर बस वेरी गुड ही तक ख़त्म हो जाता है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या वेरी गुड है वहाँ पे। हैं ये देखिए, इस पे 1.6 करोड़ रुपीस खर्च हुआ था। हैं ये है अमृत सरोवर है, 1.6, इस पे लिखा भी है बोर्ड पे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोर्ड पे लिख भी दिया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किया इन्होंने। नीचे की, उसी की नीचे की तस्वीर है, कहाँ गया अमृत, कहाँ गया? जेब में, सबकी जेब में गया। अमृत तो घर बन गया ना अपना, उसमें हो गया है ना। अब आपको अमृत सरोवर की 1-2 तस्वीरें दिखाएंगे। वाह, ये है अमृत सरोवर। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कहता हूँ, सीमेंट से पैसा स्लिप होके आता है। हर चीज़ को सीमेंट कर दो, हर चीज़ को सीमेंट कर दो। बताइए ये इसमें इसकी कोई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है? पूरा नीचे से सीमेंट हो गया है। ये देखिए, रानी झांसी के नाम बदनाम किया है इसने, आदमी ने ये बना के। और मैं 15 दिन बाद गया था इसको देखने के लिए, 4 बेंच लगाई थी, एक टूट के गिर गई थी। अब आप जाके देख लीजिए, कोई ऑडिट करता है कि अमृत सरोवर कैसे है यहाँ पे?
और उसकी कॉलेज देखिए, मिशन बहुत अच्छा है, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं, आई वुड से, है ना, मगर ये हो रहा है यहाँ पे पैसा खाया जा रहा है अमृत सरोवर के नाम से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम है, ओके, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है टाइगर सेंट्रिक कंजर्वेशन। बस टाइगर बच गया, सब बच गया है, बस सब कुछ हो गया है ना। मैंने एक किताब लिखी थी थ्रेटन बर्ड्स ऑफ इंडिया 2012 में, उसमें बिल्कुल सिंपल सा, मैं बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं हूँ, इतना बड़ा स्टैटिस्टिक नहीं हूँ, सिंपल सा मैंने एक 158 स्पीशीज़ जो थ्रेटन है, ग्लोबली थ्रेटन है, उसको मैंने देखा कि हाउ मेनी आर फाउंड इन टाइगर रिजर्व्स। टाइगर वाले जो उछलते रहते हैं ना, अब एनटीसीपी वाले तो अब वो एमओएफ से भी बड़े हो गए हैं। अब कुछ भी करना है एनटीसीपी में पहले आप परमिशन लो, हैं, एमओएफ पहले होता था, अब एनटीसीपी। तो आप बहुत अच्छा है, टाइगर को मैं कभी भी नहीं कहता, मैं डिक्लेयर करता हूँ सबके सामने, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल इन द वर्ल्ड मैं कहता हूँ, ब्यूटीफुल मैं भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉट ओनली मैजेस्टिक, इट आई एम यूजिंग बिकॉज नो अदर कैट इज़ सच वंडरफुल और नो अदर कैट हैज़ गॉट सच करिश्मा। उसको बचाना चाहिए, उसके मैं कहता हूँ अगर 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, मैं कहता हूँ 100 होना चाहिए, बट लुक बियॉन्ड टाइगर। टाइगर इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। टाइगर अगर नहीं है, जिस कंट्रीज में टाइगर नहीं है, क्या कंजर्वेशन नहीं होता है क्या? वहाँ भी तो होता है ना, ठीक है। तो मैंने जो ये एनालिसिस किया 158 बर्ड्स का, उसमें से पाया कि 50% आर नॉट फाउंड इन टाइगर रिजर्व्स हैं। द बेस्ट फॉरेस्ट, लोग कहते हैं टाइगर से हैं, बेस्ट फॉरेस्ट विच आई हैव सीन इज इन निकोबार, अंडमान निकोबार में तो टाइगर नहीं है, वहाँ क्या नहीं काम करना चाहिए? मेनी थ्रेटन्ड स्पीशीज आर फाउंड देयर। तो और जो इसमें 50% जो अंदर भी है टाइगर रिजर्व, सम स्पीशीज है सर्टनली बेनिफिट फ्रॉम टाइगर रिजर्व, नो डाउट अबाउट इट, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो many species which are found in tiger river, they don't generally benefit by because they live in much bigger areas. So tigers, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है एनालिसिस। हम लोग रिचुअल्स में बहुत बिलीव करते हैं, पेड़ लगाओ। हम लोगों के पिछले यूपी में, आई डोंट नो, यहाँ पे तो एफॉरेस्टेशन क्या है, आई डोंट नो मच अबाउट इट। यूपी में 23 करोड़ पेड़ लगाए एक दिन में। इज इट पॉसिबल? बताइए। 23 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, हर इंसान का एक पेड़ है। मैंने भी लगाया, मगर आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये मैं फेस को ब्लैक नहीं कर पाया, कर लेना चाहिए। ये क्या रिचुअली तो है ना, ये है। बम्बई में प्लेग्राउंड पे पेड़ लगा दिए उन्होंने। बम्बई में प्लेग्राउंड जो होता है ना, बम्बई में रहा हूँ बहुत साल, मैं बम्बई में 38 ईयर्स आई वाज इन बॉम्बे। अगर आके बालकनी में अगर 4 गमले रखे हैं तो गार्डन है, और 10 रखे हैं तो बहुत बड़ा गार्डन है, और इतना बड़ा अगर ये लॉन है ना, तो ये आपका ह्यूज प्लेग्राउंड है। और हॉल कहते हैं, हॉल जरा तो इसने जो बम्बई गए ना, इतने बड़े घर में दो फैमिलीज रह सकती हैं, इतना जितना भी है। अब प्लेग्राउंड में अगर आप पेड़ लगा दोगे तो दूसरे दिन तो बच्चों ने जब खेलने की जगह है, थोड़ी सी जगह ही है, सब खत्म हो गए, मगर आपका रिकॉर्ड बन गया कि पेड़ लगाए थे। तो ये चल रहा है हम लोग क्या, रिचुअलाइजेशन ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ द मेजॉरिटी। अब आप इसमें कहिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट आजकल है, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज है। अब आसाम में कितने हैं? आसाम का मतलब क्या है? काजीरंगा है, और हुआ मानस हो गया। मानस इज शेडो, काजीरंगा के शेडो में है। और जो है वो तो भूल गए, सब भूल जाओ। डिब्रू सैक्वा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हैबिटेट्स इन इंडिया एंड द मोस्ट यूनिक हैबिटेट इन इंडिया, आई वुड से। जो डिब्रू सैक्वा नहीं गया, जाइए आप वहाँ जाके देखिए, वो ऐसा आपको हैबिटेट हिंदुस्तान में तो कहीं मिला नहीं, पर मैं पूरे हिंदुस्तान में गया। टोटली नेग्लेक्टेड है, टोटली नेग्लेक्टेड। कभी कितने लोगों ने डिब्रू सैक्वा का नाम सुना होगा? आधे। काजीरंगा तुमने तो सुना ही है यार, तुम बता दोगे या नहीं? उत्तर प्रदेश में 26 पीए हैं दुधवा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और भी देख लीजिए, कॉर्बेट राजा जी उत्तराखंड में हैं, 18 पीएज हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे वंडरफुल जिसे कहते हैं ना, अगर आप जाइए माउंटेनस पीएज हैं वंडरफुल, बट टोटली नेग्लेक्टेड। वो अच्छे ऑफिसर्स को नहीं भेजे जाते, पनिशमेंट पोस्टिंग होती है वहाँ पे सबका वो है कि वो कॉर्बेट में हमारी पोस्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है।
ठीक है, आप भी बताओ। मैंने मध्य प्रदेश का नहीं लिया है। ठीक है, गुड है। अच्छा 39 PAs हैं आपके यहाँ, तो फिर भी बहुत अच्छा है ना। सतपुड़ा को भी यूज़ कर लेना चाहिए था, मगर लोग कान्हा बांधवगढ़ी तो जानते हैं ना, सतपुड़ा तो बहुत से लोग आज पहली दफ़ा सुना होगा उन लोगों ने। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वी शुड गिव अटेंशन टू अदर PAs ऑल्सो, एंड दे आर फैसिनेटिंग एरियाज़। और मैं कहता हूँ आप लोग इंस्टेड ऑफ कान्हा और दुधवा इसके बाद जाएं हैं, आप इन जहाँ जाएंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, पॉसिबली फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हो, मगर इट इज़ बेटर टू बी इन द गुड फॉरेस्ट देन एंजॉय द गुड फैसिलिटीज़। हैव वी डम्प्ड द थ्रेटन्ड स्पीशीज इन गार्बेज, ये भी आपके आसामी की तस्वीर है, और बहुत ही थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। हिलौल बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं इसी पे। ये कहाँ की है? बाहर की है, यहाँ के डंप यार्ड में है। सबसे ज़्यादा जो ऑलमोस्ट अनवारुद्दीन चौधरी यहाँ नहीं है, ही हैज़ काउंटेड 442 greater adjutant, probably 50% of the population of the world on the dump yard. And most of the world is symbolic है, I'm not saying that. And what type of food they are getting it. Changing threats in fast changing world, बहुत सी changes हो रही हैं, wind farms, power lines, free ranging stray dogs, and बहुत सी हैं. I'll not go into all the details, but I'll talk about briefly with one by one. Power lines have become a huge problem now. Out of view, out of mind. वो लोग समझते हैं power line है, इसलिए कि अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो you will not find a carcass of a bird below it. If you are doing research, only then you will find it. Because carcass तो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है या कोई प्रेडेटर खा लेता है। WIA की रिसर्च है, they did the research in Jaisalmer, and according to their research 100,000 birds die every year in that area where they had done the research, including smaller birds, not the bigger birds, only 100,000. तो ये BNHS ने, आप नोट कर लीजिए, बीसेरोस ये भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पावर लाइन्स हैव बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 100 से भी कम रह गए हैं। WIA इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज डूइंग वंडरफुल वर्क टू कंजर्वेशन ब्रीड करके, और WIA की रिसर्च है कि ऑलमोस्ट 18 बस्टर्ड्स डाई एवरी ईयर आफ्टर हिटिंग द पावर लाइन। और कीप ऑन, अब पिछले साल नहीं, इस साल तो अभी नहीं मरा है कोई, मतलब पिछले साल कोई 5 बस्टर्ड मरे थे पावर लाइन से टक्कर, विच वी नो ऑफ। जो ख़त्म हो गए, मर गए हैं, तो वो उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ। जो आई एम अ डॉग लवर, बट आई लव पेट डॉग्स, आई डोंट लव स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स शुड बी एलिमिनेटेड। लिख लो, आप कर दो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग इट। स्ट्रे डॉग्स शुड बी एलिमिनेटेड, आइदर दे शुड बी मेड एज पेट करो, जिसको भी शौक है। अगर किसी को स्ट्रे डॉग का है, आप रखो, 200 कुत्ते रखो स्ट्रे डॉग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर देयर शुड बी नो स्ट्रे डॉग। सीतापुर एक गांव, वो डिस्ट्रिक्ट है, 2 साल में 7 बच्चों को मारा स्ट्रे डॉग्स ने, गरीबों के बच्चों को, हैं, अमीरों के बच्चे नहीं मरते हैं उसमें। 17 साल की लड़की को लद्दाख में स्ट्रे डॉग्स ने मार डाला, 17 साल की लड़की को। तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, मेरे पास पूरी एक फाइल है स्ट्रे डॉग का मैनेज, एंड दे हैव बिकम अ ह्यूज मैनेज फॉर द वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट चेंज एक, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। सैंड माइनिंग, हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स अलग हैं, यूनिक हैं। वो देयर इज़ वन बर्ड नोन एज द इंडियन स्किमर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैंड माइनिंग की, है इलीगल सैंड माइनिंग की। और इलीगल सैंड माइनिंग का माफिया ऐसा है कि उसने रेंजर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, जिसने जो बंद करने गया, और सारे गार्ड्स वगैरह को मारते हैं। बट इज़ अ ह्यूज क्राइम एंड इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑन द सेम थिंग। इज़ अ ट्रेड इज़ अलाइव एंड किकिंग। लोग समझते हैं 1972, अब तो 50 साल हो गए 72 के एक्ट को, 52 साल हो गए, कम हो गया है। नो, इट हैज़ गॉन अंडरग्राउंड, बट इज स्टिल वेरी प्रिविलेंट। एंड ये सब रीसेंट तस्वीरें हैं। हमारा एक स्टूडेंट है रजत भार्गव, वो ही इसी पे काम करता है। ये शिकार का है, अभी 20 दिन पहले शिकार हुआ, पूरी पार्टी मनाई गई, वीडियो है, सब कुछ है, वीडियो है, जाने क्या क्या चीज़ें हैं उसकी, जाने कितनी तस्वीरें हैं। FIR तक नहीं हुई है इस पार्टी की, हंटिंग की, बिहार की है ये। बिहार में नेट्स हर तरफ लगे हुए हैं, कभी कोई 1-1 किलोमीटर के नेट हैं,
ये देखिए तस्वीरें, ये किसके, फ्लाइंग फिश तो नहीं है वहाँ पे ना, जो ऊपर उड़ेगी तो पकड़ लेंगे। दीज आर फॉर बर्ड्स हैं। और गवर्नमेंट कहती है नहीं कुछ नहीं हो रहा। हमने तो देखा नहीं। मैंने कहा आप जाओगे तो तभी तो देखोगे, बाहर तो निकलो। हैं? ये सब प्रोटेक्टेड एरिया के हैं। ये रिजल्ट है। ये सब पिछले 2 साल की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें कोई नहीं है मेरे। यही मैं जब भागलपुर गया 2 साल पहले, मैंने कहा झील पे झील भरी हुई है, हर तरफ बहुत अच्छे वेटलैंड्स हैं, नो बर्ड। मैंने कहा क्या हुआ बर्ड को, ये सब हम लोग पकड़ लेते हैं। एम्प्टी झील, तो मैंने लिखा भागलपुर झील से। हाँ, ये देखिए सड़कों में मिल जाती हैं। Should we not follow good examples? मैं इस पे एंड करूँगा। There are some very good examples, जैसे मंगला जोड़ी क्या नाम है, चिल्का में, it was a poacher's village. Now it is one of the finest birding areas of India. Finest birding area. अब वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। अभी किसी ने बताया कि वहाँ मत जाना, इतनी भीड़ होती है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ, इतनी भीड़ होती है और सब बर्ड वॉचिंग करने आते हैं। तो many areas can be converted if we work with the communities, we will convert it into it. What should be done? Accept the problem, only then we will solve it. अगर डॉक्टर ये आप कह दीजिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर दवा कह देगा आपको, है? आप अपने से झूठ बोल रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादातर अपने से झूठ बोला जाता है। नहीं, हमारे यहाँ कोचिंग नहीं होती है, हमने देखा नहीं है। एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, तभी तो आप कहोगे कि भाई हमारे यहाँ ये कोचिंग होती है, हमारे यहाँ इतना स्टाफ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमें आप और फैसिलिटीज दीजिए एंड आई विल डू इट। जैसे एग्जाम्पल नहीं है, सतपुड़ा में बताया, सब कुछ कर लिया उन्होंने, है ना। तो बहुत जगह तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो वही मैं कहता हूँ, डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट। और उनकी प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट उसकी नहीं है, पूरी जैसे कहते हैं ना कम्युनिटी की प्रॉब्लम है पूरी। और तो यू कैन रिलीजियस लीडर को यूज़ करना चाहिए और बहुत से अच्छा सा, तो यू कैन रीड इट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It is really a hard work to show so many like the realities happening throughout the world. And sir, I think we'll have a couple of questions from our participants at the end of the session. Now, may I request Dr. Vibhuti Prasad Lahkar sir to take his presentation. Oh, sorry. Good afternoon. Thank you for inviting me for this first wildlife conservation seminar. অসমীয়াত ক'লে সবে বুঝি পাবনে? শেষৰ ফালে असमीज में बोलने से अच्छा है या हिंदी में? ठीक है, ट्राई करेंगे। तो मेरा इतना अच्छा हिंदी मेरा बहुत खराब है, स्टिल आई विल ट्राई। तो मैं बताऊंगा ये ग्रासलैंड के बारे में, जो हम लोग का मानस का ही ये ग्रासलैंड के बारे में बताऊंगा मैं। ग्रासेस जो हम लोग आजकल खाना खा रहे हैं, जो चावल खा रहा है, जो गेहूं खा रहा है, वो ग्रासलैंड से ही आए। ग्रासलैंड इज बेसिकली ए प्लॉट ऑफ लैंड वेयर ग्रासेस आर द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट ऑफ स्पीशीज। तो और वो ग्रासलैंड मतलब वेजिटेशन होते हैं जहाँ वो कार्बन स्टोरेज बहुत होता है, एंड इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रासलैंड ऑब्लिगेट स्पीशीज सर्वाइवल के लिए वो ग्रासलैंड में ही जिंदा रह सकते हैं। वही मैन देन many pollinator of crops and natural vegetation, millions of people are dependent on the grassland.
लेकिन ग्रासलैंड का भी बहुत समस्या है। जैसे हम लोगों का ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, after independent, lots of grassland is converted into agricultural land, and then plantation. This is thought to be a wasteland. Even till 2000, people used to do plantation in grassland, and some areas still they do. And then unsystematic burning and livestock grazing. As हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइवस्टॉक है, तो ये ज़्यादातर और गांव में आजकल ज़्यादा ही नहीं है, तो वो और हम लोग का कोई ग्रेजिंग पॉलिसी नहीं है, हम लोग का कोई ग्रासलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी भी नहीं है इंडिया में, तो सब लोग वो ग्रासलैंड में जाते हैं। एंड देन आवर ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो, एंड देन लोग ग्रासलैंड से वो खेत कलेक्ट करते हैं। देन आवर ग्रासलैंड इज ऑल्सो नॉट ए प्राइमरी ग्रासलैंड, इट हैज़ ए हाई टेंडेंसी टू डेवलप इनटू फॉरेस्ट। सो हम लोग ग्रासलैंड को मेंटेन नहीं करेंगे तो एक तरफ से सिमोल जैसा या फायर रेजिस्टेंस जो ट्री है, जैसे सिमोल हुआ, ऑक्सी हुआ, वो सब ट्री एक तरफ से फॉरेस्ट हो के जाते हैं। तो एक तरफ से जैसे ग्रेजिंग का प्रेशर, फायर और एक तरफ से वो जैसे पेड़ वगैरह सब मिलके ग्रास लैंड में खराब हो जाता है। उसके ऊपर इनवेसिव स्पेसीज जो आपने देखा है, व्हाइट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्रोमोलिना ओडोरेटा, आमार अहोमियात जार्मानी बुली कওঁ, এই জার্মানিটোৱে দিস ইজ ক্ৰিয়েটিং হেভক ইন গ্ৰাছলেণ্ড। এণ্ড অলছো মাইমোসা ইনভেসা, মাইকেনিয়া, দিজ আৰ আদাৰ সাম অফ দ্য থ্ৰেডছ ইন গ্ৰাছলেণ্ড। এণ্ড দেন সাম অফ দ্য activities like conversion of tea garden, development activities, all these things has also destroyed grassland in extensively. हम लोग का मानस का grassland, why it is very important? Manas is a place जहाँ all the grassland dependent species are found together. This is the only place. ये हम लोग हमारा लिए बहुत important है, क्योंकि मानस का grassland में सब जानवर एक साथ मिलता है। If you go to Kaziranga, some species you are missing. If you go to Dodua, some species are missing. Kana, some species are missing. Or even Corbett, or in Royal Sichuan, Royal Bordia, wherever, some species are missing. All these blue are all grassland dependent species. And then some of the species, even including tiger, are dependent on the grassland. And some of the obligate grassland species are like pygmy hawk. As you know, this is the Manas we have, this is the endemic species. Then hispid hare, swamp deer, buffalo, rhino, and hog deer. And interestingly, there are 13 globally bird species, which are, if you see, these are all 13 are found in Manas. That's why if we don't conserve, हम लोग मानस का grassland नहीं बसाएगा तो, and that's why when Manas was created in 1970s, that time it was only focus is grassland. And then some of the species, Manipur bush quail, which was almost 125 years, it was no record. And in 2013, Dr. Anwaruddin Chaudhary has rediscovered in the grassland of Manas. So it's then Bengal florican. Only it is, sir will know better, then still भी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में अभी मानस में ही सबसे ज़्यादा Bengal florican है. Apart from same time also Kokilabari में ही outside protected area there are some species. Like then other species are Finsbaya, Mars bubbler, black-breasted parrotbill. All these we don't know anything about these birds. What is the status? और लेकिन ये grassland ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? And these birds will disappear. So as SARS told that these birds will disappear from the wild. Then also other some of the turtle species like these are also dependent on the grassland. They live in grassland and also they breed in grassland. So some of the species triconid hill turtle. तो बैकग्राउंड क्या है? ये हम लोगों ने ये बेसिकली इन 2005, 2008, 2011 when mission from UNESCO as it is a World Heritage Site visited Manas frequently, सब बार बोलते हैं कि मानस का ग्रासलैंड का हालत बहुत खराब है, you should do something. Then
then sir, field director Sergeri sir, with them we have developed a work that to monitor and map the entire invasive species in Manas. So हम लोगों ने देखा कि दो सबसे dreaded invasive species Cromolina odorata and Mycenia mycantha, वो ये दोनों species इंडिया में और वर्ल्ड में ही about most 100 worst invasive में आते हैं और ये सब species का ज़्यादातर खराब हो गया था हमारा से. So basically हम लोगों ने क्या किया तो एक बेसलाइन सर्वे किया और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो सब किया. तो मैं थोड़ा स्किप करता हूँ ये मेथोलॉजी वगैरह. तो हम लोगों ने तीन प्लॉट भी 3 साल की एक प्लॉट किया, एक कंट्रोल प्लॉट को अप्रूटिंग मैनुअली अप्रूटिंग किया, उसको कटिंग और बर्निंग किया और फायर भी किया. उसको मूसा के सामने एक प्लॉट है, आप लोग देख सकते हैं. तो ऐसे पूरा एरिया में सर्वे किया, पूरा एरिया में सर्वे किया और उसको हम लोग एनवायरमेंटल बहुत सारा फैक्टर भी लिया. फैक्टर लेके उसको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी किया कैसे हो सकते हैं. लेकिन वो सब दिखाया और वो सब दिखा के भी देखा कि नीचे कैसे पूरा ये रेड particularly green dots दिखाया कि क्रोमोलिना how क्रोमोलिना is spreading in going to be in future. और same thing Mycenia is also is spreading. तो उसके बाद फाइंडिंग हुआ कि हम लोगों का कि 30% of existing grassland is invaded by these invasive species. And same thing also predictive modeling we बोला this all red things, red dots are mostly these are in invasive and mostly ये ज़्यादातर साउदर्न बाउंड्री में जहाँ लोगों प्रेशर है ज़्यादा, लाइफ स्टॉक का प्रेशर है और वो सब एरिया में ज़्यादा दिखाई दिया. इन इनसाइड देयर आर इनसाइड और अलोंग विद द रोड साइड ये ज़्यादा दिखाई दिया क्योंकि शायद गाड़ी में जाते हैं या जहाँ नया कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब एरिया में गया. तो सेम थिंग ऑल्सो माइकेनिया के उसमें भी गया. तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पब्लिश किया. तो ये है सर बांसबारी मूसा के सामने ये प्लॉट था, नॉट ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रासलैंड. तो उसको हम लोगों ने 2014 में प्लॉट ये किया. उसके बाद अराउंड 3-4 years के बाद इट इज़ कम्प्लीटली चेंज एंड नाउ आप लोग देख सकते हैं मूसा के सामने कैसा ग्रासलैंड डेवलप हुआ है. तो हम ये मैनुअल अप्रूव के मेथड से ही हुआ है. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट क्योंकि उसका ग्रास स्पेसीज डाइवर्सिटी, ग्रास रिचनेस वो भी बढ़ गया वो सब एरिया में. ये मूसा के सामने अभी जो ग्रासलैंड है तो उसको भी हम लोगों ने पर्टिकुलरली ये सब पब्लिश किया ऑल हिरेंद्र शर्मा सरगेरी सर के साथ. तो उसको स्केल अप भी किया हम लोगों ने. तो अभी एक फील्ड डायरेक्टर उस टाइम में थे, हम लोगों ने एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप किया और स्टेट लेवल का वर्कशॉप किया और वर्कशॉप में एक हम लोगों ने एक कंसोर्टियम बनाया. ऑल द NGOs like WWF, WTI, RNAC, field director, all we came together and developed a consortium and all of us then they distributed accordingly. We thought that we will work in this area and accordingly सब लोगों ने काम शुरू किया. एंड देन हम लोगों का ये एक वर्कशॉप हुआ जहाँ नेपाल से, भूटान से ऑफिसर आए, जो डुडुआ से आया, वाल्मीकि से आया, वो लोग सब उधर हम लोगों ने ये वर्कशॉप किया ज़्यादातर. और एक उधर ही एक एक्शन प्लान डेवलप करने का डिसाइड किया. और उसी दौरान हम लोगों का ये पर्टिकुलरली फ्रॉम पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम ओरांग में एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था कि गार्डलिंग के लिए. तो गार्डलिंग जो पेड़ पर्टिकुलरली शिमोल पेड़ गार्डलिंग करने शुरू किया. वो अभी भी कर रहा है बहुत सारा जगह में. देन ये करना शुरू किया और हम लोगों को और एक प्लॉट दिया गया फिर रुपोही में सेम यू कैन सी द डिफरेंस कंट्रोल और आउटसाइड कंट्रोल पूरा खराब था. अभी रुपोही इफ यू गो रुपोही ग्रासलैंड यू कैन सी हाउ इट इज चेंजिंग. सो ये सब काम बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सर ने बताया ये ग्रासलैंड मैनेजमेंट का काम जो पूरा लॉन्ग टर्म होना चाहिए. एक बार एक ही जगह में करने का कोई फ़ायदा नहीं. तो अभी जैसे
जय श्री हेलो हाँ, तो ऐसे पेड़ आफ्टर गार्डनिंग ये मरने लगता है, एक साल के भीतर ही 1 साल से 2 साल तक टाइम में मरने लगता है। सो हम लोगों का ये इम्पैक्ट हुआ है कि इकोलॉजिकली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रेस्टोर ग्रासलैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। हम लोगों को पता चला है अभी रुपोही एरिया एटलीस्ट 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इतना अच्छा तरफ से ग्रासलैंड डेवलप हुआ है। बहुत सारा लोग जो कृष्णमूर्ति सर भी बोल रहे थे, लोगों का इधर जो काम किया था, इन लोगों का डेली वेजेस इनकम हुआ है, ECD का मेंबर और सारा कैंपा के उसी मीटिंग के फॉलो अप से कैंपा में भी डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया, वो सब भी हम लोगों ने सजेस्ट किया। एंड आवर एफर्ट हैज़ बीन जॉइंट एफर्ट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड बाय यूनेस्को इन द रिपोर्ट। एंड और हमने देखा कि बांसबारी का जो ग्रासलैंड था उसमें बंगाल फॉरेगन 2003 से नहीं आया था, तो 2020 सालों से 20 के बाद बंगाल फॉरेगन भी देखने शुरू हो गया। एंड देन दिस इज सम ऑफ द ये क्या बोलते हैं फुयापरा का ग्रासलैंड। और एक सबसे मिलके ये हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया। इवन दिस इज ए यूनिक एक्शन प्लान, इवन काजीरंगा और अदर पार्क का भी आसाम में भी एक एक्शन प्लान नहीं है। सब लोगों ने सब ने मिलके WWF, WTI, even people from Wildlife Institute of India, we participated, and then this action plan were prepared. And this is the condition of grassland. If we see 1998, 95, 2001, and 19, now almost 35% of the grassland is remaining. And however, the amount of species we have, it's going to be big challenge if we don't invest on this long term, and also effectively implement the action plan, because action plan has very elusively mentioned how to do. SOP is there. We know that a bulldozer, what is called harrowing in grassland is not going to effective. It may create more damage in the grassland. There may be some bacterial things. There are soil bacteria kind of things are working, but per hectare manual uprooting is very effective. Within 40 to 50,000, 60,000 rupees per hectare manual uprooting is possible with the continuous where people is also can involve. So हम लोगों को ये continue करना चाहिए. I would suggest through this that this work should continue if we want to keep alive Manas beauty and revival, particularly sanctity of grassland species. So with that, thank you. Thank you, Vibhutida. You have highlighted the grassland, especially the wildlife habitat management interventions that together we tried, and the results that you have shown very clearly, and how it improves over the years if we continue the interventions. So, the last presentation, I will tell a story. Good. So, because when we sat together to organize the conference, we thought of that let us come some resolutions, some clear cut, as Chief Sir has also said in his morning session, that if we organize such program inviting experts, we should consider the knowledge, thoughts, works, ideas that contributes to work in near future. So I will give a special focus to habitat securement. What we did together in Manas, especially in Manas entire tiger reserves and in Greater Manas landscape, entire landscape.
So in all we know that 1872, the first black and white notified protected area was Yellowstone in USA. You will surprise to see when the Yellowstone celebrated its 100 years of existence in 1972, the number of total protected area increased to only 1,823 globally after 100 years. But if you see this figure, just in 2005, after 23 years, the figure went to 1,13,707 total protected area. Why the entire world? When the CBD was organized in 2003, 188 nations, they accepted the fact that protected areas are the most effective tools in a globalized, in a highly populated world to secure the biodiversity. So, considering that, what we did together in this Manas landscape, we can see the results, how we have worked towards that goal. PPT. So Manas, I think, since we are very well aware of the Manas and its legends, both at national and international level, and the species richness, what we see in Manas, and I will focus into just 30 years back, detail what happened in Manas. Manas had a very rich history, and Manas faced the biggest trouble during the civil political unrest time. And Manas is an example, this is an example the world can see, the world can learn how collaboratively, if we work together, everything is possible and we can really bring visible changes and can prove that we can actually contribute to save our forest and wildlife. Manas was, in that time, in 1992, Manas was put in danger state by the UNESCO World Heritage Site. And the formation of BTC, when the BTC was formed in 2003, before that started working, but when the situation became calm, peaceful, the local communities also, they started working towards this. And at the same time, in Kaziranga, we started the CWRC, Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation, and how this CWRC contributed bringing Manas back in some ways. So in 2006, the first rhino was reintroduced. And if you see this part of Manas landscape, this area, especially western part, like the existing Manas National Park, then after the introduction of rhinos, then there were some other conditions put by the UNESCO World Heritage Site to bring the flagship species that lost during the agitation time, and also to extend the existing protected area towards western part. Because Manas is not the national park, this entire landscape up to Sun Coast, actually the same habitat. It's a contiguous habitat. Then we came up with the vision Greater Manas in 2008. And it was declared that time also in 2008 that we will work together to create Greater Manas, to achieve Greater Manas. And at the same time, we also work to maintain, gain our
lost heritage back. And fortunately in 2011, Manas got its status back. And that year, 2011, out of 42 World Heritage Site was in danger, only Manas got its status back, and every world celebrated because this happened because of the collaboration, contribution, and acceptance, and involvement of all stakeholders, especially local communities and other like CBOs. And in 2014, as conditions put by the UNESCO World Heritage Site, we translocated eastern swamp deer. Krishnamurti sir, the same, we were also very successful. We just translocated 39 individuals in 2 batches in 2014 and in 2017. And if we see the population, this is the population, and there is straight increasing. And recently, our park authority, they counted, and together we found the total number of individuals today is 174. Maybe, sir, we'll get more individuals this year. So, video? A very short 2 minutes video on translocation. I think you will enjoy this. And as working towards the conditions that was put by the UNESCO World Heritage Site, in 2016, the western part of existing Manas National Park, 350 square kilometer was added to Manas National Park. So this is the first step towards the Manas Tiger Reserve. Out of 605 square kilometer Ripu Reserve, 422 square kilometer was notified as a Raimana National Park in 2021 in June.
And this is another achievement just in like 2016 350 and 2021 422 square kilometer. Means now we Manas like tripling the existing protected area. And this is on 5th of June, it's a very interesting story because we were a part of that. On 5th June, it was declared by the Honorable Chief Minister. On 8th June, it was notified in the public gazette. On 9th June, all the Forest Minister and told that we are coming to Manas or Raimona to hand over it to BTC formally. So it's it was very exciting. And on 10 June, formally the notification was handed over to BTC by the government of Assam. So now the issues and problem, this was the vision, to maintain the habitat connectivity, and we have achieved together the 350 square kilometer and 422 square kilometer, but we are stuck in Chirang RF and part 2 Manas RF. So if you see the habitat, we can see actually this just 10 years habitat land use map, the changing and challenges like huge pressure of habitat change due to anthropogenic pressure. And we conducted a survey in 2018-19 to see the use of by wildlife through the human settlement area, and we have found that entire area was actually used by elephants and other species. We have both, So we have clear evidences. Only problem, now this is where we remain in the middle part. The route that goes to Galepu, mainly in Manas Part 2 RF and Chirang RF. So this is the right platform to discuss how to go ahead to get it connected, because ultimately then only we will achieve the vision Greater Manas, because this is fragmented. And what you have done in Satpura, actually compared to that it's nothing actually. If we see the quantum and the possibility, because the IDVR, there is wide, 5-6 kilometer wide. Naturally it is already maintained, and elephants and other species. Also we saw Bengal Hurricane during our survey, sir. Bengal Hurricane and pellets of speed hair in those areas. So there is possibilities. So I think this is the right time how we take decisions and take it forward so that this entire habitat is well connected. So this was my story to you all. Thank you so much. And may I request all our speakers to the dais to face the problem, like questions and answer, response to the answer. And the good thing is that all our speakers, we have covered habitat and especially birds to grassland and relocation to translocation. Excuse me, এটা cordless লাগিব ইফালে. And thank you so much for all of you giving your time, and we actually did our first phase of the presentation well in time. So we have some time, we can 10-15 minutes so that we can discuss and take forward your questions.
Yeah, please. We expect a big hands for all our presenters. Please. If there is no questions, we will celebrate our competition. Please tell your name and like organizations in one line. Yeah. Yes, please. My question to Longjing sir is this, that the future of conservation in Manas depends a lot, as you said, about the transboundary collaboration between the two states, as the forest is shadowed between the two countries. So, sir, what do you think that is the future of conservation, this transboundary collaboration, and how far we can increase the scope of this collaboration? As presently, if you see, the collaboration is limited to 1 or 2 or 3 important aspects like tiger monitoring and sharing of information and all. So, what is the scope of this transboundary collaboration? How can we achieve higher collaboration, and how will this impact the conservation as all, as well as the communities, the life of the communities? Will it have an impact on these aspects as well? Thank you, sir. Thank you. I thought I spoke the less and I should not be questioned. Nevertheless, let me put it bluntly here. If we have to work, we have to work, but we need to work with the authorities. Firstly, an NGO-led, yes, an NGO should be led behind so that the government institutions runs together. If the government institutions do not work together, and if we live up to the NGOs, today one NGO will come, tomorrow the other NGO will come, how are you going to work? But if there's an institution which is very well recognized, the Department of Forest and Park Services from Bhutan and the Department of Forest from Assam, if that institution comes together, that I feel there's a way forward. If not, then if it's left up to the individual NGOs to come and go, some may get funds this year, next year they may not get funds. So if once that you're talking about, I know what you're talking about. You're talking about the Tramka. So if that Tramka has to follow up, then somebody from behind has to continue. If that has to continue, the two government institutions have to work together and carry forward. It should not be left up to the NGOs to move forward. NGOs should be the steering behind those to get it forward. I'm sorry to tell you this because sometimes you get some funds and you carry forward. Sometimes when the fund doesn't come, then you halt it there. But if it's institutionalized within the two organizations, I don't think you'll have to work. But as of today, I just said this afternoon, we are doing an excellent job. The Raimuna is an excellent job. Manas, we did excellent. The Manas CFO has just come on the other side. We are doing a good job. That the joint the patrolling is working very well. We are sharing this information and any time. But now even the Raimuna that I said in the afternoon when I started off. So thanks to the government of Assam and the BTC for that excellent work that we have done. So this is how we can move forward, provided that we institutionalize that. So we do not leave behind for the NGOs or the CSOs to pick up that momentum. So I would only make a suggestion that
yes, NGOs is the catalyst that should keep moving, but it has to be institutionalized. So I'm expecting that once that is institutionalized, things would go a far more way than we are going today. Thank you. I hope I cleared your query. Okay. Sir, I have different questions. Is there any rhino population in Bhutan? I am Pranjal Besbura from Assam Science, Technology and Environment Council. Just a simple question. Okay, thank you. Hello, sir. Myself, Nazrul Islam. I am working as biologist with Wildlife Trust of India in Manas Landscape. Sir, my question to Krishnamurti, sir. Sir, it's a Bhavar landscape. Manas Landscape is a Bhavar landscape. So, water is a main, means scarcity of water in winter season is a limiting factor for wildlife. So, I would like to ask you what kind of activities or intervention we can implement to restore water in winter season, sir, in Manas Landscape. I think you are asking about the water scarcity during the winter months in this Tarai landscape, this Himalayan landscape. Actually, I am not well versed with this landscape, but a simple fundamental principle is that if you make this landscape grid by grid, maybe 2 kilometer, 3 kilometer by grid, and you see if the water body is there or not, then you also know the density of the animals and all. So based on that, you can choose places where you can create artificial water holes in the form of ponds or a stop dam, or maybe dikes. You can stop some water also from the your river area. So those kind of structures can be planned here also. Hello, sir. Myself, Kankan Jyoti Kaushik. I am a range forest officer. I am working in Raimana National Park. So I will continue from Nazrul's questions. Really, the water availability is a big concern in the Bhabar tract. And since in terms of habitat restorations and habitat management, Raimana is, since it is a recently declared national park, we are still learning, sir. But we also tried implementing by implementing artificial water holes. But what we have experienced that it's still during winter months the water still dries up, sir. That is one of the concerns, sir. So I would like to ask Dorji, sir, since he mentioned about artificial water holes in the foothills of Bhutan. So what were the challenges you faced, and what would be your suggestions to overcome it, sir? Okay, thank you. What we are doing is at the moment we are sharing 50-50% from our existing tape water which is coming to the Phipsu Wildlife Sanctuary. But recently we have also explored the boring. So there's no electricity except that Phipsu we have now solar electricity, but we are now going for solar pumps. We are just on the verge of testing that solar pump. So we are just the tender, since the government institution we have to go by the norms. So we have just tendered, and then we have seen that the water level is there. So we are using that the bore wells to be operated through the solar pumps. So this is what we are trying, and maybe it would be successful, and then maybe we could even share to you in the next few years. Good evening, everyone. I am Rakhi Sharma, currently working as a BTR Development Fellow. My question is to Professor Asar Rahmani, sir. Sir, I want to a personal experience also. Like when we go to restaurants or cafes, we find these insect incinerators,
And like if you're sitting there for at least even 30 minutes, you'd hear those blasts, and it's very painful for me. I have experienced it. And today when you mentioned that about 60% of the world insects have already disappeared. So my question is like, how do we address this? Like, is it an adaptive challenge that we are to change the perception of the people? Because it is also about the aesthetics and disease control. And I mean, like, how do we address it? If there is even a solution to this. Is it working? Can you hear me? Can you hear me now? I agree with you that we should not have those what do you call it? Insect killers. I call them insect killers. Most of the people say it is for mosquito. No, it is for any insect which comes here. So I hate that. We certainly don't like it. We should not put it anywhere, I would say, except in few cases like in hospitals and other places, or schools particularly. And even if we put it, it should be done for a minimum time, not throughout the in the evening. And hello, yes, now you can hear. So I certainly agree with you that we should not put. I don't like it. Understand? And regarding the disappearance of the insects, it's not 60% of the species have disappeared, but 60% of most of the populations have disappeared. What it used to be, say, 100 years or 50 years ago, now we have got, compared to those numbers, now we have got very few insects left, and we all have experienced it. Now when I told you about this, please, you all should also start looking it. In some of the good forests, if you go there, you still have insects. But in the cities, they are almost all gone. So I don't know. I don't have a solution for that. I'm just giving an example. And the reason is that we are using pesticides. We call them pesticides. Actually, they're biocides. They kill millions of, in the hundreds of other species for which they are not targeted. So I don't have a solution. I don't know how to reverse this trend, and it should be reversed. I don't know. Is not regarding the insect. In some of the areas where they have apiaries or they cultivate bees, many farmers don't allow pesticides to be sprayed. So even if you see the number of the bees or the species of the bees, they have also disappeared. So that is a fact. I am just giving a fact. I don't know. I don't have a solution for that. Okay. Thank you. Thank you, sir. Regarding the question raised in regards to the paucity of water in our tiger reserve area, since it is a Bhavar trek, naturally the water level is quite low. So in some cases, even our staff are not getting any drops of drinking water also. So still we used to provide from available sources. We used to carry it on a tanker, and we carry it to many of the camps by truck or smaller tractors, and there we used to supply them with this drinking water and for other purpose also. For recently, for wildlife requirement for the wildlife, we have constructed around 25 numbers of artificial water cemented saucers, which are placed right in the middle of the forest area where the animal used to move around. So, but luckily, unfortunately, the problem remains same, because only during the time of summer season, whenever the rain is quite huge, then it gets filled up and the animal can easily enjoy that kind of water. But during the time of winter, when the rainfall goes down, it becomes dry. So you can now, if you go to park, you'll find all the 25 saucers are empty because not a single drop of water. So now we are trying to fill it by carrying water from some nearest available sources by jet water reservoirs and supply it to the camps, and so that the animals can enjoy the water in the winter periods also. So here the problem is very acute and is an unsolved kind of thing. When recently, in case of some camps inside park where there is no water, we have installed solar water supply system, but that's cost around 8 to 10 lakhs of rupees per water system. So it is very costly. So we are having a huge problem. Plus we can't construct any kind of artificial solar system in some other areas where elephant used to come and destroy the system. Because in Ranthambore it's quite successful because they are installing many of the water supply system run by solar power. But there is no such problem of elephant or other animals attack. But we are used to have this damage issue.
So hopefully, if it can be sustained by supplying water, I think. But I have a bigger problem, bigger plan also to create huge areas wetland, natural wetland. At least for a winter period, the little bit of water remains from the rainfall, and this can be well used by the animals. So hopefully, that problem of water, it will be sometimes solved in coming days with some bigger and better system for water supply for the whole year. So hopefully we'll get a good results in coming days. Only my another question was to Asad Ramani sir. This is a long practice in most of our Kaziranga and Manas also, that we are used to have this controlled burning of grasses, so that new grasses come up and this herbivorous animal can get a good stock of their food and they can sustain their livelihood. But since you know that we are having around 50% of area under grassland, and grassland, mostly this grassland bird, we are having number of grassland bird in our habitat in our Manas area. So if we go for this control burning every year, are we destroying the habitat for this grassland bird also, or is it a boon or is a curse for us? That's why I want to get some little clarification, because it will be required for future management, future preparation of our tiger consumption plan. Thank you for my issues. Difficult question to answer because it depends which bird are you looking. For which bird do you want? Because many birds really get benefit when the grassland is burned or even grazed. See, Vibhuti said livestock grazing is a problem. I can take liberty to correct you. Grazing is never a problem. It is overgrazing which is a problem. Grazing is a part of the ecosystem of most of the grasslands. Grasslands have co-evolved with graziers. So grazing if grazing is a problem, you see Manas or Kaziranga, wonderful, there are hundreds of grazers, but grass is not overgrazed. We have done it. Yes, so I'm just saying. So coming back to the point, I think Vibhuti will be able to give you much better answer, because he has been doing research on the grasslands of Manas for many years. But certainly I would say for Bengal falcon, and Vibhuti will also probably agree with me, and he most of the time agrees with me. We both agree with each other. But for Bengal falcon, I think it is controlled burning of grassland is absolutely necessary, because they live in short grass plains. I mean, it should be below the eye level. That is the rule of a thumb. So it should be below the eye level. Most of the bustard species, the Bengal falcon is also one of the bustard species. So they live in short grass plains where earlier natural grazing with huge herds of grazers used to be present, but now those grazing regime we have almost destroyed it. So I think for black-breasted parrotbill, Jordan's babbler, slender-bill babbler, we have to leave some patches of grassland for those birds when we are doing it. So that we always recommend patch burning. Those species will be able to find space or escape from there, and then they can come back when the grass grows back. I'll give it to Vibhuti. I think what we do in Madhya Pradesh also, burning is sometimes it's must. So what you can think of is that going for a rotational burning. You divide a grassland into 4 quarters. So 1/4 you burn it that year, then move it to next year. In a rotation way, 4 years you can cover entire grassland, so that you will not burn entire area, only you will burn 1/4 of the area. So the conservation of birds is also tackled, and also the grass requirement for the ungulates also taken care of. Same thing, I will also say that rotation burning koriboi lagibo, kishuman pets eri rakhibo lagibo, aru tar agoto ami sabo lagibo je আমার যেবিলাক টার্গেট স্পেচিছ সেইকেইটা ক'ত ক'ত আছে। এতিয়া আমি ফ্লৰিকানখিনি জানো, ফ্লৰিকানখিনি ক'ত ক'ত আছে জানো, কিন্তু তাত বাহিৰে যিবিলাক আৰু গ্ৰাছৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ আছে, मैं आसामीज में बोला कि हम लोग
We know only florican where they are, but species like Finch via Mars bubbler, then yellow straighted bubbler, Jordan bubbler, those are also very important for as a grassland. So we need to find out first where are they are distributed, because we have worked earlier on Bengal florican, not on those in other bases. So we need to find out their areas where they are first found, and then we can leave these areas for as a pets burning. So I think that should be the solution to go ahead. The most important areas. Leaving some areas behind. That way not only birds, sir, will also other Harpethomona, insect, all these things we can also preserve. So basically if we do 100% burning, entire leaf litter gets changes. So soil burns up to the soil. I'll just add a few lines of what Vibhuti said, and what we practically tell in the field that bahut बढ़िया burning hoche, actually that is bad burning. That is number one. We should not burn everything. That is number one. Number two, early burning is the solution. We burn grasslands in this month, and most of the birds starts their nesting activity from this month. So actually we are not helping them actually. That's how I call, sir, here in Assam we have big mammal myopia. We manage our forest for big mammals. We often forget the small animals. Insecta to bahut dur hai, sir. So there are many studies in grasslands, and they say that early burning, basically the end of November, is the best time to burn our grasslands, but acha burning nahi hoga. Actually that's what we want. But most of the managers, we do that mistake. We want a clear site of 1 kilometer, and we say, बढ़िया burning hoise. But that should not be, actually. Sir, actually I have a question to Ramani, sir. I'm Rathin Barman. I work for Wildlife Trust of India. Sir, as I said that here in Assam, in Guwahati and Eastern, wildlife means rhino. Wildlife means rhino, and for some areas wildlife means it's rhino, tiger, and elephants. We only see those things. And most of our decision makers also, they are only for these three species. Sir, with your first experience, can you just suggest us how to influence the decision makers to go beyond these three big mammals for conservation? Sir, before you answer this question, I just added to this. Okay, my name is Hilul Jyoti Singh from Bodoland University, for the report, just to note down. Actually, see, research is everything. So without research, you may not know anything, just speculation. So we did a small research in Orang National Park, way back in 2015 onwards, like this. So we examined the bird diversity before and after burning, and we did not find any significant difference actually. So there are some things, I forgot all those things, but actually that I forgot just now. But maybe there are some particular species you have to look into it. Otherwise, as a whole, the diversity did not change so much. But if we again divide the whole 3 months or before, or after 3 months before, then also we have seen particular trends. So without research, just by saying everything is not correct. Anyway, thank you. My question. Basically, how to influence decision makers to go beyond rhino, tiger, and rhinos, elephants. That's why I say that I have failed. Now it is younger generation who should take it up, because I give my, in the sense that when I was in the standing committee of the Ministry of Environment and Forest for almost, I think, 20 years, they used to call me whenever there is a discussion. We'll start with this. You have to think beyond tiger, beyond elephant, beyond rhino. So they used to call me the father of the lesser known species. But now you are the grandsons of the lesser known species. You have to take it up. I have no answer, because if you see any brochure, anything, any report of the MOEF, there will be only a tiger.
It is for all of us to take it up that we should talk about, we should write about the lesser known, I won't call it lesser known or unknown species or lesser studied species. Vibhuti gave a wonderful lecture, and he also talked about the grassland birds which are found there, like the black-breasted parrotbill, slender-bill babbler. I did some small study, and RNK is now expanding that study and doing wonderful work, and I keep on receiving good results, good comments about their studies. Slender-bill babbler is, I'll talk about the black-breasted parrotbill. Black-breasted parrotbill, according to the Handbook of the Birds of India and Pakistan by Salim Ali, if you see their description, you will see they have written, it will look like that it is found in the whole Brahmaputra Valley. Because 50 years ago, handbook came nearly, first volume was published in 1969 and the last was 74. So it is more than 50 years old book. So the distribution has totally changed. What I found that the black-breasted parrotbill is found in 5 areas. There could be 1 or 2 more areas which I was not able to survey properly, but just 5 or 6 areas. And some of these areas are nearly 200 kilometers from each other. So they are patchily distributed. If you see them, I am not able to show it here, but if you see my map of the black-breasted parrotbill, Manas, Kaziranga, Orang, and Dibru Sakwa, and that area, and Manipur, Kabul Lakja, in that area, that sort of a thing. So distribution has changed greatly for the black-breasted. So we have to, and these are all obligate species of the grassland. They cannot live anywhere else. Black-breasted parrotbill is also a weak flyer. So it is unlike florican, which can fly very fast long distance. These birds are confined to all these areas. Fortunately, these areas are very well protected also. And the Kaziranga is very well protected. Manas is also fairly well protected. Dibru Sakwa is not so well protected, unfortunately, but I'm sure that there will be young forest officers who will go there and make it much better. Orang is also, so there are nearly 10 species which are endemic or semi-endemic, which are not found anywhere else in the world, and they are only found in the grasslands of the Brahmaputra floodplains. So these grasslands are extremely important. So we have to give attention to these. We have to highlight these regularly. Only then the government will also think about this, these lesser known species. There are nearly 70 endemic birds of India, and there are a lot of reptiles, which for some species, we don't even have a proper picture. Manipur bush it was last seen, confirmed record in 1935 or 36, and then it was seen in Manas, and but we don't even have a picture. When I was writing my book, I have to take an illustration, and how many people in the ministry or anywhere, government ministry, will give even attention to the Manipur bush quail. So I think your question is, now you have to take it up. The WTI should take it up, lesser known species. Good evening, sir. My name is Namami, and I am from Tezpur University. So I have a comment and I have a question for Krishnamurti, sir. First, I'll go with the comment, which is responding to even sir's question and Rahmani sir's answer. I was just thinking, I'm not typically from wildlife sciences. I was just thinking that when we look at these tourism brochures, Incredible India and all of that, it's only the charismatic species that come on. We go to Gir to see the lion, or we go to Bandipur to see the elephants, and Kaziranga to see the rhinos. So in some way, maybe we have to work on adding charisma to these lesser known species. And I'm just reminded of this community again in Arunachal Pradesh, this village, who has done some conservation efforts again with WWF's help to protect the black-necked crane. And they started this ecotourism work, and they printed brochures with this black-necked crane. So people started traveling to their village to watch the black-necked crane. So in a sort of adding charisma to the lesser-known species, it could be a conscious effort from everybody.
So I'll just, my question to Krishnamurti sir is, like village relocation efforts often is faced with people's resistance. So it is a terrific presentation and lot of learning, and congratulations on the success. I wanted to know the challenges, what you have faced right in the beginning, or how long did it take you to address those challenges, and how did you do it? It's a good question. Actually, relocation is always a challenging job, but what we have done is creating a models in Satpura Tiger Reserve. So it was a big challenge initially. When we relocated first 2 villages, it was a big challenge. Once we relocated 2 villages, we created models. We showcased the models. So then after, it was only just floodgates were opened. That villagers saw their their colleagues, their relatives and all, how they are living in a better way. So once you get convinced the local people, then they came forward for this one. That's the thing. You have to create examples. Then only people will go. So that's one thing. Second one thing is that continuous hand-holding is the another thing. So we relocated like Dai village 20 years back. Even now my forest guard is there. So he is in charge in that village. So there is a separate forest guard. I talked about cluster approach. So there is a forest department official, then the park authorities. We are taking care of their needs and their things, which are also met through converging many government schemes and also involving NGOs also. So these 2 things are very, very important. One is creating the model, another one is the convergence, and the third one is the continuous hand-holding in relocation. See, even today in Satpura, if we give a land model, there are another 20 villages that they are ready to get relocated. So that is the motivation. That's the thing which people have seen. So you have, I told about almost 13,000 people we have relocated. Have you ever heard any complaint against Satpura Tiger Reserve in the public media? And transparency is another important thing which you have to practice. What we can do, we tell to the communities. We give the options A, B, C. If you want to go, you go. Otherwise, no, don't go. This is a voluntary. Nothing is forcing here to get relocated. So transparency is another important thing, and another one is the commitment. That commitment has to be there with the communities. Once you relocate them, it's our duty to settle them in a proper way. They should get all the benefits. They should get all the facilities. Till then, our hand-holding and our commitment should be there. That's very, very important here. That's why we are able to do this. And that's why even I told you the support from the highest political leadership, then administration and the forest officials and the senior officers is tremendous in Satpura. So they have all seen, and they have seen that people are getting benefited. The communities are getting benefited. The local MLA is coming to my office and asking, sir, is gaon ko bhi aap relocate kariye. So this is the thing which is happening in Satpura. That's why people are getting relocated, and we did it. So that's the reason. I think commitment and hand-holding and the trust factor is very, very important. The villagers see, park people, they don't lie. Whatever they say, it is been done. So there is no difference between me and my forest guard. So whatever I say, the same thing my forest guard will also say. Whatever my forest guard gives a commitment, that we also follow. So that thing is very, very important in human relations. Here the human relationship is very, very important. I will say one thing. Biology is very, very easy. It's only the human ecology you have to manage. If you can manage human ecology, you can manage biology easily. So that's very, very important. And one more thing, I just wanted to say that people are discussing about only why projecting tiger. You all know, we are all, basically many of you know the science and all. It's a affect species, it is the poster boy, it's the charismatic species, it's the umbrella species. That's why we are protecting. By protecting tiger, nowhere it's proved that the biodiversity has gone down. In fact, the biodiversity is completely increased. So what we are not focusing is not because we don't want, because we don't have much information. If we have information, we can do that also. So by protecting and showcasing tiger or leopard or elephant, we are doing good for the biodiversity, not the other way around. This is my personal opinion. And also you see the water conservation is happening all in these tiger reserves. And I just say in Satpura, our logo is not tiger. This is the only tiger reserve where the logo, mascot of Satpura Tiger Reserve is the Indian giant squirrel. So any visitor who comes there, they will ask, sir, kahan tiger hai? हमने बोला tiger ही क्या? हम तो इसको protect कर रहे हैं. जैसे canopy species, indicator species. By protecting tigers, we have conserved the Indian giant squirrels. So this is the thing which we have to tell. It's nothing wrong in projecting tiger. That's the way you get the support from the public. Otherwise, people will not support your conservation also. So it's better to use these poster boys or so-called charismatic species to get attention of the public and public support and the decision maker support also. That's what I wanted to say. Thank you.
Start working here. Mr. Krishnamurthy, so your presentation is too good and you have done really a very great job here. Just one small query I just want to understand. Like when you relocate the villages, did you relocate them in the forest land itself or you went to the outside land? So, yeah, that's what I'm saying. So, don't you think it will create some problem? Because, some challenges. Because, for diversion of forest land, normally, ministry has a lot of, this is, lot of repercussions for that. Diversion is very easy. Yeah. So, under FCA also. The last person cannot hear. Please go on. Sir, actually in relocation there are two options because I didn't have much time. The option one is the land cash option. Option one we call. The second option is the land option. If the villages are ready to get relocated through the cash option, it's easiest. Yes. Because normally in a tribal family in Madhya Pradesh, there will be 5 units. 5 units means now per unit they get 15 lakhs. So it means even 4 means they will get around 60 lakhs. So they can get big money and they can go and settle anywhere. That's the first option. The second option is the land option, 2 hectares land we have to give. So for that, even under FCA, relocation from any protected area, tiger reserve, there is no NPV, there is no compulsory afforestation and all. So the process will take you at least 6 months to get sanctioned. So that much you have to work, sir. That's very easy to get the permissions from FCA. So we have done it. So in that case, you have to identify the degraded forest land. Yes, right? that is what, sir. There are many small things I can talk many hours here. Yeah, I know. So you first decide the village, then show the villagers the options. One option which forest department has got. So these are all the lands हम दे सकते हैं. दूसरा villages को दिखा दें. 1, 2, 3 दिखा दिया. 3 में वो कौन सा select करते हैं. Then there should be written commitment from the communities. एक बार उनसे commitment लिया, फिर then आपको proposals बना के भेज दिए sir. It will be done in 3 to 4 months time and it has been taken up in the top priority by Government of India also. Relocation is considered as the one of the important activity. So you will get permission sir. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हमारा यहाँ थोड़ा सा issue है like entire BTC area I'm talking about, not the entire state. Mostly it's a forest land. Yes, sir. Density is a little higher. Sir. So degraded forest land identification that is a little bit difficult. And if at all we have identified, again there are other issues coming up. Sir. We have to convince the political leaders. So many things are there. वो हमारे यहाँ पे भी last में सर हमको भी degraded land नहीं मिलता है. Then we went for some better forest like 0.4 से लेके 0.5 तक भी गए हम लोग. Because even in Narmadapuram district now we don't have any degraded land. So इसलिए we have to justify these things sir, because these are all the things which is meant. What is the prime objective is that don't destroy good forest. But whereas here you are settling and you are protecting one forest. What I shown is 11,000 hectare area मैंने अंदर जंगल में बचाया हम लोगों ने. So हमने divert किया 4,000. So it's a good trade off. So कोई भी government सर इसको देख के बोल देंगे नहीं आप बिल्कुल करिए. It's brilliant. Yeah. So ये है. मैं खुद I am involved in 9 village relocations. Last 2 years back I relocated 3 villages. So हम पूरा सर even government of India officials के साथ भी ये चीज़ है. When there is a conviction and you know the objective is clear, so people give sanctions for us. There is no problem, sir. It can be done. Sir, it shows one hope. The connectivity, it is nothing impossible actually. It's not impossible for us. I see that. Connectivity, you mean to say that Raimana too? Yeah, especially. So मध्य प्रदेश में हम लोग सर नॉट ओनली टाइगर रिजर्व में एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ. हम केवल टाइगर रिजर्व नहीं, हम बफर एरिया से भी निकाला है. सतपुड़ा में हम लोग 13 गांव बफर से निकाला. वी हैव रिलोकेटेड फ्रॉम अदर स्मॉल सेंचुरीज ऑल्सो. वी हैव रिलोकेटेड फ्रॉम कॉरिडोर एरियाज ऑल्सो. So we have a government resolution, cabinet decision that relocation can happen to any forest village if the villagers are willing. The only underlying principle is that voluntary. Yes. People should come forward and they should ask. Then you can do, sir. If the villagers are not willing, then that's the main challenge out here. That's the main challenge. And thank you so much. And we'll take 2 minutes, sir. Yeah. Madam, I would like to add in your relocation. I was in Uttarakhand for some time. It also depends upon the lifestyle pattern of the villagers. In Rajaji National Park, there are Gujjar communities.
they are nomadic in nature and they produce the meal. Uttarakhand government was trying their best to relocate them, but they are not mentally prepared. So this is also one point, sir. You will agree to me. In a static family, it is very easier for relocation, but the nomadic people like Gujar and all, maybe Uttarakhand will take a few more decades to relocate them. Thank you. Good evening, sir. Okay. Myself, Rizaul Haq. I'm a consultant from Wildlife Trust of India. My question for Rahmani sir about insect. Actually, I have witnessed so many elephant casualties for last couple of years, whether it was electrocuted or shooted or poisoned. So one special category of insects I can notice within the carcass of the elephant, okay, which is not noticed in any other area, just near in the carcass of the elephant, and it is gradually declining. I have noticed it. So for disposal of those carcasses, we used to add their salts, phenyls like this to dispose the carcasses. So is it impact the population of the insects, or should it be changed? There is a saying in ecology, there is life in a dead tree. है ना? Life in a dead tree. Everything in nature is important. Carcass is also important. Carcass is never waste. So to dispose of and put whatever chemicals here is not a right thing from my point of view. It should be left for nature to decompose. And scavengers to do it, all sorts of things to do it, except in few cases, I would say. But if it is in the forest, leave the carcass. I remember that when I went to Dudhwa, not Dudhwa, Kaziranga, I think 2016 or 15, there was an elephant carcass on which the vultures were seen for almost a month. When I went there, it was 25th day of the elephant carcass, after the death of elephant carcass for almost 1 month, and people used to go there to photograph vultures in that area. So I don't think that is the right thing to do, that you put the chemicals and other things on the carcass and think of this. Let nature take place. So it is better to leave it like that. But when it happens within a revenue area, we cannot leave like this. Not in the revenue, but in the forest and other things, I think it's better. I said that exceptional cases. If it is in the revenue, why can't we also transport it to the forest or the edge of the forest? We do a lot of things. See, we have to respect nature, we have to understand nature, and we have to respect nature and follow the natural laws. So scavengers, see, we all talk about the pyramid and the top one. Top is not most important. The bottom of the pyramid is the most important thing. Litters are most important. The termites are important. The bacteria is important for maintaining the forest. Not only the top one. That's what I said, that the best forest which I have seen was in Nicobar. And there is no grazer, there is no ungulate, and there is no large carnivore. How is the forest surviving? For millions of years? So the forests have their own dynamics. There the grazers are mainly insects. Large. A lot of, you must have also seen, I'm talking about the youngsters like that, you must have seen leaves with holes or cut edges. Who has done that? All done by insects in the night. So the insects are also huge grazers. Okay, thank you. Thank you, sir. It's not a question from my side. So some of the young generations may feel that all is lost. So please do not feel so. At least in Bhutan, we don't do that. We have birds now. We were on to this black-necked crane. Now we know that the white-bearded heron. Just now, I think you missed it. My presentation, I showed one that has now come to Phipsu, and then we are quite comfortable that it will do well.
But now we have the representative from the mammals, we have from the birds, but nobody was there from the fish. So maybe in some other days we will have a fish person saying the same thing. So it's who gets the top priority over what. So in Bhutan, what we are being a Buddhist country, what we do is we have now gone on to the mashir, the golden mashir. So we are going for this high-end fishing. High-end fishing, that is catch and release. People are willing to pay $1,000 for that, provided we are able to protect that. So that's what we have recently ventured to that. And in fact, the last minister, when he went around to the villages, he asked the people, so which animal or the birds do not affect your crops? They said, no, everything affects except the fish in the water. Yet we even targeted that, and then maybe as an ecotourism. So that's what we are thinking. Maybe people living around the fringes of the river beds are able to protect. There's a massive illegal fishing. So if you can protect this, maybe in the form of getting high-end fishing, mashir, so now we will be able to protect the other fish too. So please do not give up. The life is still there and is yet to go. Last comment, as head of Bhutan's forests are also there and CSDs are also there, I think we need to think how we can revive the Tramka, because with 2017 we met last. After that we could not, because of COVID, it has gone down. And I think earlier every 6 months we used to, have meeting regularly so that to discuss various issues, including research, community involvement, all things were there. I would like to highlight in this platform that this should be continued, so that our friendship and the transboundary things could be exemplary to others. Thank you. Excuse me, sir, I have one query to Dorje sir. Sir, myself, Jujis Pandeka, I am working under Field Director Office, Manas Tiger Reserve as biologist. So, sir, many people already asked so many times that how many tigers residing in Manas National Park specifically, and in Bhutan and in Raimana National Park. Recently, sir, in 2022, Raimana National Park Park Authority got one individual of tiger. And sir, I just wanted to know ki your team, have your team examined the tiger stripes with your own tigers? Yes, we have done that. So we have, in fact, we have a tiger research center across the Manas, your Manas. So on the top of the hill, we have that Bhutan Tiger Center. We share the same PTC, the Bodo Tribal Council, and the Bhutan Tiger Center. It's there. So we have just recent the numbers that we have come. The last census that we had was 6 years ago. Now Raimana or in Phipsu, we reported only 1. Okay. So this census we reported 7. Okay, and we have even able to match up the strips. So. Yes, sir. My concern is, sir, I just wanted to urge our CSD sir and Philater sir. For last 2 and 3 years, sir, we have not shared any data with Bhutan team. So, sir, if it will be possible to share cumulative data, then it will be very grateful for us to know about the tiger population in a specific area. How many tigers residing in Manas and in Bhutan also. So, like last 2 years, I have observed that so many tigers suddenly vanished from Manas National Park, and after 2 to 3 years again, we got some new individuals. Likely, sir, I wanted to share one very important data. Like I found one individual that was captured in 2018, and that tiger again captured in Bonodi Wildlife Sanctuary, which is situated in Odalguri districts. Aerial distance probably 60 kilometers from Manas. So sir, I just urge that concern कि अगर हम लोग data share कर पाए तो a very good inventory can be modified. In fact, that's what we want. We must be counting the Indian Manas tiger in our Manas, and Manas might be counting our tigers. But yes, sir. I'll tell you,
we have been doing this, and my colleague is here who is willing to share this. That's why I'm saying it has to be institutionalized. So the department to department, whoever conducts this research also, the information should root from one institution, so it is formalized. Today somebody else is doing, tomorrow somebody else is doing, then it gets lost. The institution, the forest department in Assam and the forest department in Bhutan will never die. That will be there, so I guarantee you this will happen. But one of the enigma, I don't know how many tiger biologists are here. We had a tiger biologist. I asked him the question. Okay, fine. 2018. So only me, sir. Yeah, I'm saying the tiger biologist I'm asking. We had 103 tigers. In our recent camera trap, 60% of those tigers are missing. Yet we are able to get 131 numbers today. We lost 60% of the time the tiger that was captured in the 2017. But yet, what I as just a layman could think is maybe it's a cat family, so they are a prolific breeder. Provided you get space to breed, they are doing that. But the tiger biologists haven't been able to answer my question. What happened to that 60% of the tiger that was captured 6 years ago? Because the tigers that we captured, 131, the numbers have gone up, but it didn't match to the earlier tigers. Yeah, so what happened to those tigers? So that's what we need to ask this. So maybe a tiger biologist keep scratching here, and then later on you will be able to give me this question. And okay, thank you so much. Yeah, please. Just last one. Last one. Yeah. Yes, this is just a suggestion, because we heard about the Satpura model and all of us were, wow, it is a wonderful model, the relocation of the villages. It's a small suggestion that can we do a carbon footprint of this relocation, and how much of their wisdom of living with nature, because now sustainability is about living with nature and living with minimum. So how much in the process have we lost? If a small survey and a study can be done, then the relocation process can be highlighted in that method. Thank you. Yeah, your suggestion is good suggestion. So we are working on that. I am not telling that this is the best model. So what I am sharing is this is what worked for Satpura. If you wish to see, I welcome you all to come Satpura and see yourself and take a conscious decision. It's not my version which I am sharing. I am sharing the wisdom of the entire park and the wisdom of the entire state, which we have done. And many states they are coming and they are visiting our park. More than 20-25 tiger reserve officials they are coming and they are going and they are taking some inputs. So it's up to you to come and see our experience and our work and take it forward, what worked for you. And the suggestion which you are telling, the carbon footprint and how the lifestyle has changed, all these things, there are many research projects which are going on, we are doing on that. Okay. So thank you so much. So now we will conclude the first day's International Wildlife Conference Bodoland 2024. I think we are able to achieve our objectives of the technical session 1. And thank you very much for all the speakers on the dais for giving your thoughts, experiences, ideas to take it forward and to